एक एक डिटेल पूरा करना है, आपको ये यज्ञ वो यज्ञ ये रिचुअल वो सेरेमनी सब करना बहुत जरूरी है सब लोन उतारने के लिए। दूसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग कि अच्छा तो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे स्टार है, स्टार इज ऑलवेज प्रॉब्लमेटिक, राइट? कंडीशंस अप्लाई। स्टार क्या है? वन हु हैज टेकन टू द पाथ इन, तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप ये सब एक एक करके लोन चुकाइए या फिर टेक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस इन। सो दैट इज हाउ वी शुड अप्लाई दिस टीचिंग। नीदर वी शुड अज्यूम ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पता है अभी हम डिवोटी नहीं बने हैं, तो ऐसा नहीं जरूरत नहीं है, जरूरत है। लेकिन अब वो सब करने जाएं कि हम अपना चैंटिंग अच्छे से कर लें और भागवतम को समझ लें अच्छे से, तो एक काम करते हैं सारा एनर्जी इसको अच्छे से करने में लगाते हैं और ये सब जो हमारे घर में ऑलरेडी होता है उस हिसाब से उसको कंटिन्यू कर लें क्योंकि वो अलाइंड है कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ। So the formula for grihasthas is if there are good traditions in your family which are authorized by shastras, which are nice, which are not against Krishna consciousness, continue them. What's the problem? Continue them. पर जो नहीं है उसको दोबारा नया बनाने का जरूरत नहीं है, उतना एनर्जी हम जो जैसा प्रभुपाद ने कृष्णा कॉन्शियसनेस दिया है उसको लेने के लिए कर सकते हैं। एंड अगर और कुछ एक चीज कर सकते हैं तो वो है कि अपना खुद का सीरियसनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस में बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं। अब इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है तो आदमी तो परेशान हो जाएगा ना, इतना भी हम राइड आउट नहीं हो सकते लाइफ में। वी ऑल नीड सम कूल टाइम रिलैक्स करने के लिए, पिकनिक पे जाएंगे ये सब करेंगे तो दैट्स आल्सो नाइस, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी गृहस्थ का, यू नो, खुद का भी रिक्रिएशन और फैमिली मेंबर्स का भी रिक्रिएशन, इट्स इंपॉर्टेंट। एज गृहस्थास यू हैव टू गो फॉर पिकनिक, यू हैव टू टेक योर चिल्ड्रन आउट। अब बच्चा लोग को सारा टाइम मंदिर ही दिखाते रहोगे तो उसको तो कोई पता ही नहीं चलेगा दुनिया के बारे में। दुनिया के बारे में पता चलना चाहिए ना बच्चा लोग को, थोड़ा वाटर पार्क चले गए घूमने वो सब करेंगे तो वो सब भी है, ऐसा नहीं है सब माया में नहीं आता है वो सब। These things are nice as long as you know it is to spend quality time with family members and even for our own personal self. These things act as you know releasing some pressure, थोड़ा you know relax हो जाते हैं। तो recreation is important. We know युक्त कृष्णा says युक्ताहार विहारस्य युक्ते चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। So we need some down time, इसको बोलते हैं down time। So but there is Bhaktivinoda Thakur says, unless we reach bhava, we need to address our physical, intellectual, and emotional needs. So we should not unnecessarily neglect them, or we should not suppress them. Hey, let's acknowledge those needs and let's take care of them and come back to focus. But we have to remember that downtime कैसा किया जाए. There is a Maya way of downtime and there is a Krishna conscious way of downtime. कुछ नहीं तो एक न्यूट्रल वे भी होता है, जैसे अगर फैमिली के साथ में अगर वाटर पार्क चला गया खेलने कूदने के लिए तो इसमें कुछ ऐसा एंटी कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। इनफैक्ट बहुत बार ये सब करने से अच्छे रियलाइजेशंस भी आते हैं, एक्सपीरियंसेस आते हैं। जैसे अगर आप लीलामृत पढ़ो तो देखोगे प्रभुपाद बिकॉज ही हैज गॉन टू सो मेनी प्लेसेस, बिकॉज ही हैज गॉन टू सो मेनी कॉलेजेस, मेट सो मेनी टीचर्स, देयरफॉर ही इज एबल टू कनेक्ट सो मेनी थिंग्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो एक्सपोजर टू वर्ल्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, फॉर यूथ इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट यू नो अ वेरी गुड वेल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। नहीं तो वर्ल्ड के बारे में आधा चीज आपको पता ही नहीं रहेगा और आप क्लास दे रहे हो, बोल्डली कुछ बात बोल रहे हो, सामने वाला इंटेलेक्चुअल आदमी बोलेगा क्या प्रभु जी यू आर रॉन्ग, यू आर मिस्टेकन, लुक एट दिस डेटा, right? So therefore we are also supposed to be, as grihasthas we are supposed to be aware of the world. यूक्रेन में लड़ाई हुई तो है कि हाँ चलो लड़ाई हो, अब उसमें घुस नहीं रहे लड़ाई में हम, तो हमको कोई डिसीजन भी नहीं लेना है उधर, लेकिन कुछ तो मोटा मोटी हाई लेवल पता रहना चाहिए व्हाट इज गोइंग ऑन लिटिल बिट इन द वर्ल्ड। एंड फॉर दैट वी डोंट हैव टू यू नो टॉप टू बॉटम रीड द न्यूज़पेपर कंप्लीटली, थोड़ा बहुत हेडलाइंस यू नो तुरंत पता चल जाता है। गूगल न्यूज में देख लिया थोड़ा टॉप 3-4 हेडलाइंस एग्रीगेट करके दे देता है। So point is when we are aware, then you remain relevant to the society, and becoming relevant is so important. For grihasthas, remaining relevant to the society is very important. You can't become odd man out. At the same time, to become like them, we don't have to become non-devout. Saying again, दो extremes आ गया, right? So just Prabhupada, when he went to when he was living with Sally Agrawal's house, I remember Radhanath Maharaj, His Holiness Radhanath Swami Maharaj gave this class in Mayapur ISKCON Leader Sangha once, wherein he was talking about importance of remaining relevant to people. So he was telling how when Prabhupada went to Sally Agarwal's house, he was very careful to study each and everything about the Americans. क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उनके लिए क्या मैटर करता है, क्या नहीं मैटर करता है, what is important for them, what is you know, and then he used all of that to relate to them and to be able to preach to them. So becoming relevant in society is also very important.
And yeah, I was telling in the connection of, तो ये डाउन टाइम को आप वैसा एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले सकते हैं. That yeah, you are understanding about the world, you are also knowing, telling, exposing children to that, and then you can always give some nice Krishna conscious understanding of some things. Just say like when as preachers sometimes we give a lot of real life examples. How that comes? Because we come across those situations then only, na. If we don't come across if we don't meet only anyone, if we don't come across any situation, if we don't go to any place only, then how will we be able to see world from Krishna conscious perspective? So now we don't have to go out of the way. क्यों निकला बाहर नहीं प्रभु जी मैं वर्ल्ड को कृष्ण कॉन्शियस पर्सपेक्टिव देखने के लिए नहीं, पर ऐसे गृहस्था जब वो सब करना ही है तो उसको कर सकते हैं, उसको माया सोचने की जरूरत नहीं है. We can always use all experiences in service of Krishna. Like once in one lecture, one sannyasi was telling that once I went to for something we had gone to Disneyland, and there was one automatic machine which was kind of doing something can. So he was giving a lecture about how we should not be mechanical, in service. And then he immediately remembered that example of how some dioramas when they are there. Like अगर अक्षरधाम वगैरह आप गए हो, अक्षरधाम गए, दिल्ली में एक अक्षरधाम है, तो वो सब जगह देखो बहुत सारे डायोरामा वगैरह हैं ऐसा ऑटोमेटिक मूव करने वाले, So वो सोचते ही, तो then this devotee he remembered that how service should not be mechanical like this. मतलब point is when we observe the world, it's not necessarily anti-Krishna conscious or Krishna conscious. As long as these are nice things, we can always, experience is always nice. There's nothing wrong with experience, as long as it's not a bad experience. So there's a Maya way of downtime and there is a Krishna conscious way of downtime. Now, one very important thing I wanted to tell, we began this presentation by talking about paying the price. Remember that we have to pay the price. Should we look at the responsibilities as that ugly price that we have to pay? That is one way of looking at it. And that is principally philosophically correct. But if we only look at this, मैं बच्चे को अगर मैं समझूंगा यही कीमत है जो मैंने चुकाई है. This is that कीमत. It's not a healthy way to look at our responsibility. You are remembering, you are understanding what I am talking about. First slide was what? अर्धकुकुटी न्याय, आपको ये चाहिए तो प्राइस पे करो. So that is fine philosophically, but in our day-to-day life, these experiences, because they are bona fide, because they are made by Krishna, these experiences help us become more Krishna conscious. They purify us and they give us realizations. But realizations will come, as we discussed. Experience will not give realization. Experience under the shelter of Hari Guru Vaishnavas, with the guidance of Guru Sadhu Shastras, that will give realization. Sufferings that arise as a result of discharging responsibilities are not to be taken as miseries, but as purification. कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी करने में पापड़ तो बेलना पड़ता है, आसान तो नहीं होता कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, मेहनत करनी पड़ती है. तो वो पेन लेना पड़ता है. दैट पेन इज नॉट मिजरी. उसको मिजरी नहीं समझना चाहिए. उसको क्या समझना चाहिए? इट्स फॉर आवर प्यूरिफिकेशन. एंड देयर इज वन मोर पॉइंट इन दिस रिगार्ड कि व्हेन इट कम्स टू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आर दे स्पिरिचुअल और आर दे मटेरियल? सो दे आर बोथ. हाउ? When we are planning our day, 24 hours, at that time we should make a distinction between material and spiritual, so that we keep aside quality time for spiritual, chanting, reading, hearing, Mangal Aarti, morning program, lecture. So when we are planning our day of 24 hours, we should keep aside some quality time for core spiritual activities, and therefore for that effect we have to differentiate between material and spiritual. Once that is done, then when we are doing our duties, we should not see them as material. They are spiritual duties, Krishna conscious, where they are under the purview of pure devotional service. Raising children, pure devotional service. Going to office, pure devotional service. You're getting it? Otherwise, what will happen? Child is sick, and before going to doctor, we are calling our counselor. Prabhuji, if I go to doctor, will that be material or will that be spiritual? We don't have to analyze that much. If we have given our life to Krishna, if we have started our day with morning program, if we are keeping aside some quality time for spiritual, for core Krishna conscious activities, then whole day, that is helping us to become Krishna conscious and see all these things also in Krishna consciousness, and that is what becomes pure devotion. अगर वॉइस में कोई बीमार हो गया, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है तो वो सेवा है ना. तो बच्चा बीमार हो गया तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना सेवा नहीं है. वॉइस में परचेज इंचार्ज सब्जी लेके आ रहा है तो सेवा है ना. तो घर में आप सब्जी लेके आ रहे हो सेवा नहीं है. यू आर गेटिंग इट? So
And we have nice example in form of Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, such role models are there. And contemporary also, so many amazing Grihasthas are there who are progressively going ahead in their path of Krishna consciousness. My dear friend Achyut Keshav Prabhu in Pune, you know, he recently in this book distribution marathon month, Ambrisha Prabhu's current counselor is Achyut Keshav Prabhu. In this month, last book distribution, they distributed 11,000 books, na? Ambrisha Prabhu, 11,000 books, one counselor and his group. 11,000 books. So that means we have many nice examples, you know, of those who are serving in mission, those who are chanting nicely, those who are progressing nicely, those who are setting a nice example of Grihastha Ashram, and we can learn from all of them. Ours is a multi-inspirational model. We have to learn from all of them. And in case of Bhaktivinoda Thakur, 100 books he wrote. He was a high court magistrate, and he had more than 10 children. कैसे करते होंगे ये लोग मालूम है. Prabhupada also, his Grihastha life, he fulfilled all his responsibilities properly without compromise. So I think I'll skip this now because this will be. Or can we do one thing? I'll not explain. We'll just read it out one by one. Devotees will just read it out. There are some nice guidelines. I'll not speak anything because अभी जो भी speak होना था वो हो गया है, more or less. So things will be self-explanatory. So you can pass the mic one by one. Read these. So some practical guidelines now. House, money, family belongs to Krishna and have been mercifully given as gifts from Krishna. Use them in his service. Here, we have discussed this. Life should revolve around Krishna, holy name, Krishna Katha, deities, temple programs, devotee gatherings, hearing classes, live. That is also important. अभी online हर बार नहीं. लोग बीच में आते हैं. Participating in Sankirtan. Self-explanatory. Just some summary of practical Grihastha lifestyle. Wherever mic can go, you can just pass in that region. All family members gather together at least once a day to perform Aarti Kirtan reading from scripture. So this is important for Grihasthas to create the right culture, and a family that dances together. Family that sings together. Family that prays together. Okay, who will read this? As for the detachment from children, wife, and home, it is not meant that one should have no feeling for these. Actually, you should not have feeling for these. So that somebody else who is able to see clearly. You have quoted from where? You have quoted from where? VG? 13.8 to 12. 13.8 to 12. As for detachment from children, wife, and home, it is not meant that one should have no feeling for these. They are natural objects of affection. But when they are not favorable to spiritual progress, then one should not be attached to them. The best process for making the home pleasant is Krishna consciousness. If one is in full Krishna consciousness, he can make his home very happy because this process of Krishna consciousness is very easy. One need only chant Hare Krishna, accept the remnants of foodstuffs offered to Krishna, have some discussion on books like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, and engage oneself in deity worship. These four things will make one happy. One should train the members of his family in this way. The family members can sit down morning and evening and chant together. If one can mold his family life in this way to develop Krishna consciousness, following these four principles, then there is no need to change from family life to renounced life. Yes, keep reading. Keep your sadhana strong, rise early, chant early, avoid unnecessary late nights. Read Srila Prabhupada's books regularly and seriously. Important for spiritual focus. Be engaged in some service, take some responsibility in the mission. Your life is not meant only for yourself and your family. A spirit of sacrifice and service for the welfare of others.
Actively participate in preaching activities and cultivate this missionary spirit. In this regard, Prabhupada says a very important thing. A person who is householder but is initiated by a sannyasi has the duty to spread Krishna consciousness at home as far as possible. He should call his friend and neighbors to his house and hold classes in Krishna consciousness. Holding a class means chanting the holy name of Krishna and speaking from Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam. Live together in the society of devotees, feeling of friendship. Do not take association of non-devotees. Have a working relationship. Be socially pleasant. Set a good example to make them feel positive about Krishna consciousness. We can't disconnect ourselves from them. So that will not give a positive example to them. Deal with relatives, neighbors, friends in such a way that will increase their appreciation for Krishna consciousness. Avoid distracting mundane entertainment offered by TV, YouTube, etc. Use tools judiciously. Keep Krishna consciousness at priority while taking decisions in life. Be thoughtful about short-term and long-term implications. This is particularly important for us. A lot of decisions have to be taken with job, with career, with city, to settle down and all that. We should always think of Krishna consciousness. That is going to become very suffocating. First meditation नहीं हो रहा है. ऐसा प्रॉब्लम है क्या? बहुत ज़्यादा. बहुत कम चला है, थोड़ा सर्कुलेशन होता रहेगा तो. Okay. Yes, next. Earn by honest and pure means. Simple living, high thinking. Spend wisely. Do not become a victim of modern day consumerism culture. Not become a victim of modern day consumerism culture. क्योंकि हम ग्रस्त हैं, हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, तो बच्चे भी होंगे, बच्चा बोलेगा ये खरीद ले, वो खरीद ले, वो खरीद ले, वो खरीद ले. It's very easy to get carried away. We have to set the right culture. Give charity. Perform household duties with care, sensitivity, and responsibility without being excessively absorbed in them. Without being excessively absorbed. One of the most important services of a Grihastha, raise your children in Krishna consciousness. And last, Practice, preserve, and spread the principles of traditional and devotional family life. Faithfulness and lifelong commitment in marriage, culture of respect, sharing, serving, cooking at home. Understand the pitfalls of modern materialistic civilization in this regard. तो हमारा एक प्रिंसिपल होना चाहिए, हमारा कुछ थॉट प्रोसेस होना चाहिए जिसके हिसाब से हम अपना गृहस्थ की गाड़ी चलाना चाहिए. ऐसा नहीं कि the way the whole world is currently working, you know, the way the world is operating, we have to operate in that way. No, we can have whatever culture we want at our home, right? We can set whatever priorities we want to set out at our home. That is important. Otherwise, soon we'll be carried away by the current of Maya of this material world. If we don't keep some things, you know, strong, it's very easy and natural for grihasthas to, you know, just get carried away in the current of this material world. We don't want to get drowned or carried away in the current of this material world. तो उसके लिए कुछ चीजें को पहले से ही सोच के रखते हैं तो ठीक रहता है. So now very quickly, अगर एक ब्रह्मचारी के लाइफ का क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो 8 hours for body, उसमें स्लीप, बाथ, प्रसादम, नेल, शेविंग सब आ गया. 8 hours for soul, 4:30 to 9:30 ब्रह्मचारी क्लास, सेल्फ स्टडी, and then 8 hours for mission. ऐसा करना चाहिए ब्रह्मचारी को. ऐसा ब्रह्मचारी की लाइफ. गृहस्था थोड़ा एडजस्टमेंट किया हमने ऊपर नीचे. क्या किया है? बॉडी को 9 hours दे दिया है 8 hours के बदले. सोल को कम कर दिया, 8 से 4 कर दिया. जॉब, क्योंकि जॉब में चला गया ना 8 to 10 hours अभी. करेक्ट. 1 to 3 hours को होम, फैमिली, चिल्ड्रन को भी तो देना पड़ेगा. थोड़ी फ्री में सब हो जाएगा. थोड़ी आप वही से किसी को बुलाओगे, ये इंचार्ज, वो इंचार्ज, परचेज इंचार्ज, किचन इंचार्ज, जो इंचार्ज सब यही और इंचार्ज इज 1 person ओनली, राइट. तो वही 1 से 3 घंटा में करना है जो करना. तो अभी सर्विसेज का क्या करें प्रभु जी? What to do for services? We are told that we have to live for the mission of Prabhupada and all that. So as I said, first of all, so many other things are also services only. And secondly, Saturday, Sunday hai na, right? So we can do some things on Saturday, Sundays also nicely.
So 24 hours is all that we have. Morning for health, sadhana, swadhyay. It's a simple formula which many grihasthas follow. Morning for health, sadhana, swadhyay. Daytime for work. Evening for family, children. Night, remember Krishna and sleep. Saturday, Sunday, household chores भी होते हैं बहुत सारे. नल खराब हो गया, पानी नहीं आ रहा है, ये है वो है, बहुत चीज होती है. Temple संगा, टेम्पल जाना है. कम से कम Sunday we should go to temple, right? Because we said that brahmachari makes temple his home and grihastha makes home his temple. पर बोलने से थोड़ी बन जाएगा. तो ये मैं तो अपना होम को टेम्पल बना दिया, ऐसा थोड़ी है. जब तक हम हफ्ता में एक दिन टेम्पल को होम नहीं बनाएंगे, तब तक हम बाकी 6.5 दिन होम को टेम्पल नहीं बना पाएंगे. We have to take inspiration from there and we have to implement things. So therefore, every Sunday, at least once a day, once a week, we should go to temple. And services and preaching will be there. Family and children will be there. Once your children will grow, you'll have to teach them, right? So many things are there. Actually, time है ही नहीं. इसमें ही when there is a community of devotee, it helps. कोई कुछ देख ले रहा है, कोई कुछ देख ले रहा है, मिलजुल के हो जा रहा है. So this whole thing, a devotee को बहुत चीज बैलेंस करनी पड़ती है. कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऑफिस, होम. मतलब चैंटिंग में ऐसा नहीं सोचने का. But the point is there are so many things which need to be balanced. So this is our situation. Who are we, by the way? सब सुन चुके हैं इधर. तो ये हम लोग को लगता है हम लोग एलिफेंट है, बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं. हम लोग एलिफेंट नहीं है, बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. हम लोग बॉल है, सब कुछ हमारे सिर पे है, गड़बड़ हो रहा है पूरा इधर से उधर. So like that. But point is there are so many things which we have to balance. Path of perfection. In the beginning, it appears like this, and what it turns out to be is like this. So that's how it is. Krishna consciousness is simple, but not easy. And therefore, training is the foundation for any ashram. Training is needed. Otherwise, even what is written in Shastras can be misinterpreted. Jaise once Gaurang Prabhu in his lecture, he was giving this shloka as an example. Keshavam patitam drishtva pandavaha harshnirbharaha rodanti sarve kauravaha ha keshava keshava. मतलब बताओ क्या मतलब है. केशव मतलब कृष्णा गिर गए, अब वो देख के पांडव खुश हो रहे हैं और कौरव रो रहे हैं. ये है ना मतलब इसका. तो अगर कोई राइट गाइडेंस में शास्त्र को नहीं पढ़ेगा तो क्या का क्या हो जाएगा मालूम नहीं. एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि शवम पतितम दृष्टवा, डेड बॉडी को गिरा हुआ देखकर, डेड बॉडी सोचो कि बीच पे थी और वो पानी में गिर गई डेड बॉडी, ये देखकर पांडवा मतलब मछलियां, हर्ष निर्भरा, फिश आर बिकमिंग वेरी हैप्पी because now dead body is in water, so they will eat. रोदंती सर्वे कौरवाः, crows, the crows, कौवा, they are now crying. हा केशव केशव, हमारा खाना चला गया, our dead body is gone, right? So the reason I have put this shloka, because I was very fascinated by this, is that sometimes there can be something written in Shastras. Prabhupada said that this is how it should happen, but then उसके पीछे क्या था, उसके आगे क्या था, उसको आप किसी mature गृहस्थ से समझोगे तब समझ में आएगा क्या नहीं था क्या था, right? So it's very easy to misunderstand, and as it is, there are so many aspects of life which need to be balanced. So therefore training is so important, and that's one of the purposes of Nityananda Sabha. Therefore Nityananda Sabha training will be successful if it helps us understand how to be exemplary sadhakas as grihasthas. नित्यानंद सभा का पर्पस ये नहीं कि आपको आपको अच्छा हस्बैंड कैसे बनाया जाए या आपको अच्छा सन कैसे बनाया जाए. पर्पस है आपको अच्छा ड्यूटी कैसे बनाया जाए. लेकिन आपको ये सब ड्यूटीज भी करनी है, तो ये सब ड्यूटीज करने के साथ साथ आप एक अच्छा ड्यूटी कैसे बनो, दैट इज द पर्पस ऑफ नित्यानंद सभा ट्रेनिंग. सो इट शुड नेवर बी मिसअंडरस्टूड कि अच्छा नित्यानंद सभा में तो ये दिखाते हैं कि शादी कैसे करें, कैसे लाइफ पार्टनर को कैसे चूज करें, साइकोलॉजी ऑफ मैन एंड वुमेन. अगर आप नित्यानंद सभा का सिलेबस देखोगे तो ये सब रहेगा. हाउ टू अर्न मनी, व्हाई टू अर्न मनी, वेयर टू अर्न मनी, डीलिंग विद पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, सोसाइटीज. तो देखा जाए तो ये सब में तो कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं आ रहा है. लेकिन नाउ दैट वी हैव सीन ऑल दिस इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव, वी अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ नित्यानंद सभा ट्रेनिंग इज टू डू ऑल दीस थिंग्स एंड येट बिकम बेटर डिवोटी बाय डूइंग दीस थिंग्स. How to present the truth and represent the truth. How to do both duties nicely, not taking occupational duties as burden. How to deal with various temptations and tribulations a grihastha has to face. Inspiration from other grihasthas.
It helps us understand how to balance or rather synergize family versus mission, internal versus external mission, exemplary career versus time for Krishna consciousness, money, how much, too much, less, happy in this life or happy in the next life, stable material life, yeah, happy spiritual life. You see, there are a lot of things to consider, a lot of things to balance. We have to make our family a pleasant offering to Guru and Krishna. So essence of all advice, active remembrance of Krishna. Nothing else will satisfy our heart. As Narad Muni told Vyasdev. Narad Muni told Vyasdev, you have compiled Mahabharata, which wonderfully describes Dharma, Artha, Kama, Moksha. Still you are unhappy. Why? Because we have not glorified Supreme Personality of Godhead enough. अरे जिसने महाभारत और रामायण लिखी है वही डिससेटिस्फाइड हो गया. Right? तो अगर हम धर्म अर्थ काम मोक्ष को परफेक्ट करने जाएंगे महाभारत और रामायण पढ़ के, तो व्हाट इज द मैक्सिमम रिजल्ट यू विल अचीव? इट विल नॉट सेटिस्फाई द हार्ट. Now am I saying we should not read Mahabharata Ramayana? Right. I'm saying that has to be read in the with the lens of Srimad Bhagavatam, under the guidance, so that because only that will satisfy Krishna. Only remembrance of Krishna will satisfy Krishna, satisfy us. By having described things with separatist vision, you have misled people. Narad Muni is telling you this, Vyasdev. That by describing these two scriptures with a separatist vision, you have misguided people. We should be seeing that in light of Srimad Bhagavatam, in light of Krishna consciousness. And finally, Prabhupada's last instruction. I mean, last means hamara is session ka last, about who is an expert grihastha or how an expert devotee takes care of his life. An expert devotee of the Lord can mold his life in such a way that while performing all kinds of duties, either for this or the next life, he can constantly remember the Lord's guna, roop, leela, naam, dham. You see, he molds his life in such a way. मतलब हम कंप्लेन नहीं कर सकते ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, प्रभु जी टाइम नहीं मिल रहा है. अरे जो है वो करिए ना. टाइम नहीं मिल रहा मतलब तो सोचिए उसके लिए क्या करना है. सोचिए उसके लिए क्या करना है. वंस इन अ वाइल इमरजेंसी है तो ठीक है, पर कंसिस्टेंटली हो रहा है तो सोचिए क्या जॉब चेंज करना है, क्या सोचिए. सोचिए कि अच्छा कोई और स्किल डेवलपमेंट करना है क्या. जो भी करना है, जो भी डिसीजन लेना पड़ सकता है. अगर कोई और सर्टिफिकेट कोर्स कर ले जिससे अच्छा जॉब मिल जाए, जिससे मेरा टेंशन थोड़ा कम हो जाए, जो भी व्हाटएवर इट मे बी, तो वो करके जिससे कि वी कैन अल्टीमेटली रिमेंबर कृष्णा. दैट्स द पर्पस. One has to make progress in spiritual life by not associating with persons who are simply interested in sense gratification and making money. Not only such persons, but one who associates with such persons should be avoided. One should mold his life in such a way that he cannot live in peace without drinking the nectar of the glorification of Supreme Personality of Godhead. मतलब वो नहीं मिले तो हमको कुछ लगे कि अरे यार मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, ऐसा. We should mold our life in such a way that without drinking the nectar of glorification of Lord Hari, we should not be peaceful. One can be thus elevated by being disgusted with the taste for sense enjoyment. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. So with this we conclude our presentation on purpose of Grihastha Ashram. So today, since morning, we have seen purpose of Grihastha Ashram, and now we saw responsibilities of Grihastha Ashram. Okay, so what is the time? 5:50. और हम लोग के पास कितना समय है? 6:30 तक जाना है. Okay, ठीक है, whatever it is. So we can be very efficient in question answers. Ambrisha Prabhu, you would like to come here in front? So what I'll do is both I and Ambrisha Prabhu will be there to answer questions. We can now bring 2 chairs. I think that will be better. And meanwhile, those of you who would like to ask questions by raising hands, please raise hands and ask questions. Others who have some secret, private, confidential, personal questions, you can write in chat quickly now itself and keep passing on the chat. And as I was telling in the morning, that in the afternoon, that questions are actually very important because they will clarify some things, because many times there are 2 extremes of same understanding. For asking questions or for speaking, right? Answering, yeah. For answering, we'll mic. And we can keep the laptop maybe a little high. Okay.
Yes, so if there are any chats or if there are any questions, can devotees please raise hands and ask? Yeah, yes, Prabhu. My question is, I just see that Grihastha ashram is a very risky ashram. In a case like we are constantly touched with Maya, so many things are there. And we are seeing that it is quite a struggle to just maintain everything. And there are so many things. So I want to ask, like, apart from chanting, what else helped you the most in being successful in the ashram? Hare Krishna. So very nice question actually. Why? Because when we want to grow, we need books also, but we need some person bhavat also who is following. So as you said that we know the things, we know the philosophy and all, but if we see someone who's applying it, and if we take counseling from them, that's very important. Because if you see in your friend circle also, everyone is different. शायद मुझे ज्यादा गुस्सा आता हो, किसी को ना आता हो, किसी के लिए कुछ अमाउंट ठीक है, पीसफुल, किसी के लिए शायद ना हो. Everyone is different, and this counseling system is like कि when someone knows कि इसका नेचर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस दिया जाता है. So very important to have a mentor, and when we ask them questions, when we seek guidance from them, they'll guide us according to our digestion power. So you may see sometime, like I have seen that Vyasacharya many times, he will tell me one thing about me कि आप लोग ऐसे फॉलो करो. प्रिंसिपल वाइज ही सेल्फ सेम, प्रिंसिपल वाइज सेम है कि ऐसा है, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. अभी मैं शायद उसको अप्लाई ना कर पाऊँ उस लेवल पे, तो मेरे लेवल का वो पॉइंट बताएंगे, एप्लीकेशन पॉइंट. बट कोई दूसरा डिवोटी है जो हाई लेवल बताएगा, तो उसके लिए वो हाई लेवल का बता के देंगे. सो प्रिंसिपल इज द सेम. इट्स ऑलवेज अबाउट राइजिंग फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल. अब वो किसी का लेवल यहाँ है, किसी का लेवल यहाँ है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एप्लीकेशन पॉइंट चेंज होते हैं. सो वी हैव काउंसलिंग सिस्टम. Yeah, very good answer. I agree with this. So counseling system is very important, shelter. And secondly, and that kind of includes association of devotees and other things. And then gradually it happens, so we remain strong. And ultimately it boils down to our own sincerity. We get what we want. Energy follows intent, right? Where there is will, there is way. Actually, Rajsham Bro corrected me once when I said this. He said, where there is will, Krishna shows us the way. Okay. Any other live question here? Yes, bro. Truly, my question is a bit different. It is, we always say that we all want to go back to God and to serve Krishna. We know that service of Krishna is like so important and so much pleasurable to us. But being a soul, having such ananda, do we, when we are in the spiritual world, we were not knowing about this material world, that this has all these pains. And apart from knowing all these pains, we choose to come here. So why a person who knows there's a pain, then we go there? That is why Vaishnav songs mein there is one song which talks about Janiya Bhujiya. What is that song? Vish Khainu. Janiya Bhujiya Vish Khainu. We all should laugh at ourselves. Yes, that's our reality. Why? Because we know Prabhupada has told that because we had a free will. Free will means you can misuse also. We misuse. कीड़ा आ गया दिमाग में, अब क्या करें, आ गए यहाँ पर अब तो जा सकते हैं वापस. Right? So it's a fact. And what your question is genuine question. Otherwise, I think Narottam Das Thakur, whoever has written this song, would not have said, I think Bhakti Thakur, Janiya Bhujiya Vish Khainu. Jan Bhuj ke I knew, still I am taking poison. Right? Like that. So that's our reality. That's our reality. And still, chalo, wo to past ki baat hai. Abhi to present mein bhi daily wahi kar rahe hain hum. To the extent we are doing sense gratification, So that goes to show how much, though intellectually right now we are convinced, but our anarthas are deep rooted. We have a thick covering of anarthas, and that enjoying mentality is deep rooted. Yeah. Yes, Avat bro. Like I wanted to ask a practical question. So in our voice days, we were trained to do video studies. So now we are living alone. So what happens is that although we should do very properly all those things, but our listeners, most of the time we're in panic and all those things. So many times we want to offer at least incense or something. But just for the sake of reasons, we don't do it. Is it okay if we get some time offer in pant and shirt or this? Is it okay? See, there are different levels. Even if you go around ISKCON temples also, there are different levels. कहीं पे 7 बार offering होता है, कहीं में 5 बार होता है, कहीं में 3 बार होता है. There are few temples if you go abroad, जहाँ पे weekly मिलते हैं. Like we have the centers ना, satellite centers. So they meet once a week. So there are different standards.
Now depending on the situation, we have to adapt to something. But ऐसा ना हो कि हम कुछ भी नहीं कर रहे या फिर इतना खराब कर रहे कि मतलब सब कुछ ही खराब हो गया. So I remember always one line of Vyasacharya Prabhu कि when we do a compromise, ठीक है, compromise में pain होता है हमेशा. Compromise करते तो pain होना चाहिए अंदर में, but compromise habit नहीं बनना चाहिए हमारा. Sometimes we are traveling, we have to eat outside. तो हम अपना टाइप का कैटेगरी का लेके खा लेते हैं. भूखे थोड़ी मरेंगे, खाना पड़ेगा ना. तो लिया, मन में मंत्र भी पढ़ा, खा लिया. पर इसका मतलब ये नहीं है कि चलो आज हैबिट बन गया. वो हैबिट नहीं होना चाहिए. हाँ. So we have to follow some standard. तो वो आप जो और ग्रस्त हैं या फिर और जो मे बी पुजारीज हैं, उनसे डिफरेंट लेवल्स हम सीख सकते हैं और अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई कर सकते हैं. And there is no harm when it comes to these Vyasacharya related things. We can always adjust because anyway we don't install the deities at our home. We only welcome them. Welcome. So as it is Lord being, and we don't install Radha Krishna typically. Jagannath, Baldev, Subhadra, they are merciful. Like morning program is there. If you see morning program, typically it goes 1 hour temple में. घर पे नहीं कर पाओगे आप 1 hour का. Like I follow morning program structure, तो हम क्या करते हैं? We sing together मंगल आरती. एक ही बार में पूरा मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, तो उसके बाद में शिक्षाष्टकम, 10 offenses और पूरा मंगलाचरण पूरा हम करके everything gets come in 20 minutes. बट वो करते हैं. अब ये सब करने बैठेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा. तो पता पड़ा अरे भाई चैंटिंग रह गया, तो पता पड़ा वो वाइफ चला रही खाना बनाना है, ये सब कुछ चीजें करनी है ना, तो you have to adjust like. Yes. Is what you told, like the 9 hours for that body. So that is for a job. Means some person is in job. What about if some person is in business? So it will surely take some more time to do the profession. And second question is also related to that only, that we hear in many classes from devotees that like understanding comes that a business is having your own business is better than job. Because that is the correct understanding. When it comes to Varna, nobody can tell what our Varna is, and there is no Varna which is best. It is our Varna means color. Kiska color? Mind ka color, which is propensity, right? So for somebody, business may be more than suicide. You have to have business mindset. You have to have that in your blood, and you have to understand those dynamics. And for business person, job may be a very wrong thing to do. So point is, plus abhi hum business person hai ki nahi malum nahi. So those things, what we have to do is, we have to first of all understand ki we should never first of all go by something which is said. This is good for devotees. Aisa kuch nahi hai. We have very high class devotees who are businessmen. We have high class devotees who are working in jobs. Right? So aisa kuch nahi, this is good for you. But the reason why, and now should we blame those devotees who are saying like that? No. We should understand from where they are coming, what platform they are coming from. They are saying that probably they are thinking that perhaps business gives more time to you because they are self-employed. But they don't understand, as Prabhuji himself is asking this question, see now we are seeing two contradictory things here itself. When I said 8 to 10 hours, he is saying, that is what job, business will take more. And now we are hearing the statement that business karo kyunki kam usme zyada time milega bhakti ke liye. Are you seeing what is happening? Jo business kar raha hai, usse pucho. Job is 8 hours business. Business is 24 hours job. क्या बोला मैंने? राइट? लेकिन तो क्या आप जॉब करें? नहीं. सो बेसिकली क्या है, आपका फैमिली में सपोर्ट सिस्टम क्या है, आपका टीम क्या है. बिजनेस अकेला एक आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए एक टीम लगती है. देन आपको वो चीज है क्या, इधर से उधर लेना देना, इधर से उधर करना, फिर किसी को उधार दिया, किसी उधार दिया, वो सब किसी को नेचुरल आता है. बनिया लोग को, इवन आई एम बनिया, मेरे को वो नेचुरल नहीं आता है. राइट? पर किसी को आएगा, मारवाड़ी, राजस्थानी, ये सब, गुजराती जैसी. पर अगेन आप गुजराती होकर तो जरूरी नहीं आपके खून में है बिजनेस. कोई गुजराती एकदम ढपोल होता है बिजनेस में, ऐसा भी हो सकता है. नथिंग कैन बी जनरलाइज्ड. So anyway, so this was about occupation. So how we should decide based on our academic qualifications, based on our natural propensity, and some things are circumstantial also.
लाइक वो जो होते आया, ड्रास्टिक चेंजेस इन लाइफ आर ऑलवेज अचानक से मन किया अभी हम ये करने लग गए, अरे ये वर्कआउट नहीं कर रहा है तो अब ये कर दिया, चेंज करते रहेंगे ना ड्रास्टिक, तो लाइफ में आगे कहीं नहीं जा पाएंगे। बहुत बार हमको सरेंडर भी करना पड़ता है। ठीक है, आइडियली आई वुड हैव लव्ड बिजनेस, पर अगर मेरा सर्कमस्टेंसेस बिजनेस को अलाउ नहीं कर रहा है और मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसके हिसाब से जॉब इज मोर कंफर्टेबल फॉर मी, तो ठीक है मैं थोड़ा जॉब करके आगे बढ़ता हूँ व्हाइल आई एम फिगरिंग आउट सम स्टफ ऑफ बिजनेस, राइट? सो वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इन लाइफ दैट वी शुड नेवर टेक ड्रास्टिक डिसीजंस एंड जस्ट बाय like a pendulum we should not oscillate, अभी ये अभी अचानक से वहां वो ध्यान अचानक से वहां, then we will destabilize many things. On the other hand, if you see those grihasthas who have been consistently doing one thing, even though that may not be to their 100% liking, for example, क्योंकि आजकल किसको क्या वरना पता है, हमको मेरा वरना थोड़ी पता है क्या मेरा वरना है, क्योंकि कौन एजुकेशन सिस्टम था, क्या था, कोई एक गुरुकुल होता, उसके अंदर में गुरु के अंडर में हमको ऑब्जर्व किया जाता, तो हमको बताता भाई देखो तुम क्षत्रिय टाइप के हो, तुम ये करो ना, कोई हमको बता रहा है ना हमको कुछ पता है, right? In fact, एक बार चेतन चंद्रो was telling, if you ask your mind what is your varna, mind will tell कि अभी जो कर रहे हो वो वरना नहीं है। कितना पता है, right? So उस केस में क्या करना पड़ता है, circumstantially जो भी है गाड़ी आगे चलानी पड़ती है, और अगर सच में ही इतना ही conflict है वरना से, तो while you are settling things down, you can figure out okay what else I can do in parallel, and so that I can gradually shift from here to there full time. थोड़ा सेविंग्स कर लिया, थोड़ा कुछ कर लिया, बिजनेस के लिए भी कैपिटल लगता है, कितना कुछ लगता है, ऐसे थोड़ी हो जाता बिजनेस, मतलब व्हाट इज बिजनेस? सो जो बिजनेस कर रहा है उससे पूछना पड़ेगा कि क्या है, उसका ज्ञान लेना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, राइट? एंड कमिंग टू ओके, सो दोज हु आर इन बिजनेस, हाउ डज दिस इक्वेशन वर्क फॉर देम? सो सर्टेनली बिजनेस टेक्स लॉट ऑफ मोर कॉन्शियसनेस, खुद का है सब कुछ जो है, बट एट द सेम टाइम बिजनेस डज ऑफर सम लग्जरी कि आपका जो वर्किंग आवर्स है उसमें अगर आप कहीं कुछ टाइम निकाल पाओ, तो मे बी वो जैसे जॉब वाले के लिए एट स्ट्रेच 8 to 10 आवर्स आपका हट गया, बिजनेस वाले के लिए शायद वो बीच में कुछ टाइम निकाल ले, दुकान बंद कर दे, शटर डाल के चैटिंग कर ले, मतलब कुछ तो somehow that thing businessman can try to figure out. It's not necessary that he will have to consistently be involved for 8 to 10 hours. Maybe he may have to, दुकान उसको सुबह जल्दी खोलना पड़ेगा, लेकिन दोपहर में चलो 2 घंटा वो ब्रेक ले सकता है, तो वो 2 घंटा में वो काम कर सकता है जो बाकी लोग उस समय कर रहे हैं, So these things can always be adjusted. So there is nothing written on stone. Okay. Yeah. उसके लिए मतलब अगर सेम वर्क करना है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी, हाँ, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, कंपनी ए कंपनी बी हमने बोला, हाँ, लेकिन अगर एक ऑप्शन है जिसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस ज्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन आपको सैलरी ट्वाइस ना तो थ्राइस कम मिलेगी, और एक में है कि अनसर्टेनिटी की ग्रोथ बढ़ जाती है, तो कौन सा? सो प्रो लाइफ में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। अब बिजनेस का बात हो रहा था हमारा, कितना कुछ रिस्क लेते हैं बिजनेस वाले, कितना लेते हैं, हमको एटलीस्ट एम्प्लॉइज भी नो के मंथ के एंड में इतना सैलरी हमारे पास में आ जाएगा। कोविड की वजह से कितना बिजनेस सफर हो गया, कितना कुछ हुआ। आप देखिए ना कि ऑफिस के से बाहर कितना बड़े स्टॉल लगते थे, ठेले लगते थे, सब चले गए। कितना कुछ रिस्क है, तो रिस्क हमें लेना पड़ता हमेशा। बट वन थिंग वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे प्रायोरिटीज राइट है, ठीक है, प्रायोरिटी सेट होना चाहिए, राइट। प्लस वन थिंग आई एम सजेस्ट ऑलवेज डूइंग अ ड्यूटी, कि ड्यूटी जो है ना, आप ये मत सोचिए, हमको कभी लगता है ना कि जॉब में मजा आना चाहिए, जॉब बहुत अच्छा लगना चाहिए। अरे हमारा वर्ड हमको पता ही नहीं है, आज अच्छा लगता है कल अच्छा नहीं लगता है, और पता पड़ा आज अच्छा लग रहा है क्योंकि मैनेजर साथ दे रहा है, कल मैनेजर चेंज हो गया तो हमको भी खराब लगने लगा। वो सिचुएशन चेंजेस, मेटल वर्ल्ड है, इट्स गोइंग टू चेंज। आज मेरा जॉब स्टार्ट हुआ था, आई गॉट 30,000 पर मंथ, तो दिन का 1,000 रुपये मिल रहा है, आज वो कम लगता है। So things keep on changing. So if we keep on doing our duty, keeping our priorities set right, और फिर उसमें रिस्क लेना पड़ता है हमको, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी लेने आते हैं साथ में, बट इट्स अ डिसीजन एंड वी हैव टू गो विद इट। हम उसके लिए क्या, कई बार क्या होता है ना कि हम शेल्टर पकड़ लेते हैं किसी का, रोजी आप बता दो कौन सा जॉब ले लें। So, मेरे साथ में हुआ है कई बार, कुछ डिवोटीज मुझे पूछे कि आप प्रो ये जॉब लो कि ये जॉब लो, दोनों में से। तो मैंने बताया कि आप ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, मैंने चूज कर लिया। बाद में बोले अरे आपने बता दिया, मैंने बोला जॉब छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि कहीं पे भी जाएंगे कुछ दिनों के बाद में दिक्कत आती है। सो ऑलवेज वी हैव टू मेक द पर्सन फील कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आप डिसाइड करो। सिमिलरली इट्स नॉट जस्ट विद जॉब, इट्स विद एवरीथिंग। सो वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, अपने प्रायोरिटीज, अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग्स, अपने कुछ लोन होते हैं घर पे,
ठीक है, अब लोन है किसी के पास में, उसको ना चाहते हुए भी एक अच्छा जॉब लेना पड़ेगा ना, लोन चुकाना भाई घर का तो करना पड़ता है. So it's a full thing we have to see in a big picture. तो उसका कोई right or wrong आंसर नहीं है. We have to decide the situation, right? लेकिन जैसे बहुत चीजें जैसे एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से होती है, और मतलब अगर आप जैसे हम लोग जैसे डिवोटी तो है नहीं, तो हम लोग फॉलो करते हैं डिवोटी, हम लोग तो जैसे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ना किसी की मैरिज लाइफ खराब बिल्कुल नहीं है, तो उसमें फिर वो कैसे इम्प्लीमेंट करें, जैसे कि कृष्णा कॉन्शियस बनना है, लेकिन बस आपको पता है कि मैं आपको इसका बहुत अच्छा आंसर देता हूँ. मैंने कई डिवोटी सुना है. क्या होता है, पहली चीज तो एस्ट्रोलॉजर्स जो है ना 100% सही नहीं बताते हैं, और जो एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा ना कि आपकी लाइफ खराब है, उसको कहते सोल्यूशन बताओ इसका. लाइफ तो कितने लोग खराब है ना. आप ये बताओ जिसका अच्छा लाइफ होता है, घर में लड़ाई नहीं होती है, उसके यहाँ लड़ाई होती है, पैसे पोते सही हो जाता है. ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी और साइंस भगवान ने जो बनाया है ना, वो साइंस का बहुत बड़ा एक फैक्टर ये है कि इट्स लाइक अ अम्ब्रेला. भानु स्वामी महाराज, he is like a astrologer person. He says कि एस्ट्रोलॉजी साइंस ना इज लाइक अम्ब्रेला. जब बारिश हो रही है तो आपको छाता लगा बच सकते हो उससे. तो एस्ट्रोलॉजी में कभी भी कोई भी आपको कुछ भी बताए ना कि तुम्हारी लाइफ में ये दिक्कत आने वाला है, ये दिक्कत आने वाला है, उसको हमेशा उसका सोल्यूशन बताओ इसका. नहीं तो ही इज नॉट ऑथराइज्ड टू टेल दोस थिंग्स. अभी लोगों को पता होता है कि ये मरने वाला है, तो नहीं बताता है वो क्या मरने वाले हो. होता है ऐसा. So नहीं करना चाहिए. one more thing I'd like to say, astrology is not a predictive science, it is an indicative science. मतलब the purpose of astrology is not to be able to predict आपकी लाइफ में क्या होगा. It is to be able to tell you कि ऐसा करने पे ऐसा हो सकता है, ऐसा करने पे ऐसा हो सकता है, so that you can actually take the right decisions. Right? It is never supposed to kind of tell you कि ये होगा, अब कुछ नहीं हो सकता है ऐसा. No, it always, I mean, when Krishna is keeping the options open, how can astrology close your options? Plus एक नेगेटिव चीज ये होती है ओवर डिपेंड करने पे एस्ट्रोलॉजी में. एक तो ऐसी सेट है, you first of all don't know, it's questionable, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कितने, there are only few genuine astrology practitioners. Secondly, कि when you hear something from astrology, then you become biased towards thinking that way only. मतलब अब अगर then we will not take responsibility. So let's say there is a fight between me and my wife. If I have heard in the beginning कि देखो एस्ट्रोलॉजी ने बोला था फाइट होगा, तो अभी मेरा ध्यान डायरेक्ट पहले कहाँ जाएगा, देखो बोला था ना, हम ये नहीं देखेंगे मैंने क्या गलती की, मैं क्या कर सकता हूँ. So that is where these things become a little problematic at times, right? So इसलिए we should not too much depend in this time and age also. You meanwhile read questions and yeah. And what we will do, since we have time only till 6:30 and it is 6:10, so we'll answer very quickly and shortly now, very quickly. Jai Advait Maharaj type. So we are not qualified. Yes, Prabhu. Like many astrologers say to wear some certain types of responsibility. देखिए उसमें भी ना, जैसे मुझे मेरी मम्मी ने बोला था कि पहन लो पहन लो पहन लो, ठीक है, तो मम्मी के प्रेम के लिए मैंने पहन लिया था. तो दोज थिंग्स वर्क इफ यू हैव फेथ. ठीक है, उसके पीछे ही बहुत प्रोसेस होता है. ऐसा नहीं होता कि आप एक स्टोन पहन लोगे और सब कुछ सही हो जाएगा. ठीक है, तो इट्स अ साइंस. और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, कृष्णा ने बनाया है. ठीक है, आप देखो ना कि जब मून राइज, ये फुल मून होता है तो समुद्र में लहरें उठती हैं. तो जब वो लहरें उठती हैं वो समुद्र में उठा सकती है, क्या हमारे पेट में नहीं उठा सकती हैं क्या? समझे ना, इट्स अ साइंस. तो इट्स अ ट्रू थिंग, बट इट हैज टू बी फॉलोड टू द लेवल आर कृष्णा कॉन्शियसनेस नॉट डिस्टर्ब्ड. कई बार क्या होता है, शेल्टर उसका ले लेते हैं हम लेके. वेरी इंपॉर्टेंट. So we can use things, we don't take shelter of them. So when you are sick, you go to a doctor, he gives you medicines. Do you use medicines or you take shelter of medicines? And you take shelter of Krishna. So these stones can also be seen from that perspective. We use them. If you want, you use them. कोई वो यूज करेगा, कोई होम्योपैथी यूज करेगा, कोई एलोपैथी यूज करेगा, कोई कुछ और करेगा. आप यूज कर लो, बट शेल्टर हमेशा हमको कृष्णा का ही लेना है. वो उसकी शक्ति भी कृष्णा ही देंगे उस चीज की, अगर वो ठीक करेगा भी. लाइक प्रहलाद महाराज सेज इन भागवतम, if a doctor cannot cure a patient, a boat cannot save a drowning man, and parents cannot save a child from dying, right? Yes, so My question is regarding how to find devotee partner. Like I'm going to start searching for partner. So how should we proceed that? What can find out? So we can find that.
उसका थोड़ा डिटेल्ड प्रोसेस होता है. I'll cover this part in my tomorrow's class. That will be better. हाँ, so उसमें I'll give. He will be speaking on marriage and family life tomorrow, so you can remember to cover. Yeah. And there are marriage boards and things like that. In fact, वो भी एक अलग सेशन होता है इंटरनल सभा में typically. तो ये बड़ा elaborate answer हो जाएगा इसलिए not taking credit, but we try to cover something. उसके बाद भी कुछ नहीं cover होता है, तो we can have personal practice. Yes, bro. ओ वो सिंपल मेरा ऐसे वो that was nothing written on stone. वो बस एक जनरल बता रहा था. उसमें 4 hours possible he is asking कैसे हुआ 4 hours. तो 2 घंटा तो चैंटिंग चला गया. Exactly वही तो बता रहा हूँ कि अगर सुबह नहीं हुआ तो इसलिए मैं बताया कि वो रफ है. That was just some rough guidelines. You know, just to understand that that is the best which can happen. It is the best case scenario. वो कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम होता है ना, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी. तो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है कि डेली 4 घंटा आपको छोड़कर भैया कैसे 2 घंटा चैटिंग किया आपने, आधा घंटा मंगल आरती वगैरह किया, यू नो, फिर आधा 1 घंटा थोड़ा स्वाध्याय कर दिया, यू नो, तो 3.5 घंटा तो ऐसे ही चला गया, राइट. फिर आरती वगैरह प्लेट वगैरह वॉइस में तो क्या है, ये डिवोटी प्लेट रेडी, ये डिवोटी ये डिवोटी मॉपिंग, ये डिवोटी पैरापेथनेरिया, ये डिवोटी वर्शिप, ये डिवोटी सिंग. डन. और क्यों ब्रो जी शादी क्या है, पत्नी किधर है, किचन में खाना कौन बनाएगा, फिर एक ही समय सब कुछ हो रहा है ना, राइट. So we have to ये dynamic है. That's why see गृहस्थ आश्रम में ना there is lot of dynamic things. नहीं वैसे ही जैसे वॉइस में क्या, वैसे क्या लेमिनेशन ही है ना वॉइस में, बस वैसे ही करना है अपना 1 2 3 4 1 2 1 2 3 और अपना सारा जो सीक्वेंस वाइज. और ये 4 hours का है, 4 hours वाला जो आप पूछ रहे थे ना, अगर कॉन्शियसनेस अच्छा होगा हमारा तो 24 घंटा भी सोल का हो जाएगा. Yeah, that's also another point. So anyway, coming back to this thing, तो जो हम लोग वो बेसिक अपना ऑफर करते हैं ना, सबसे पहले शन बजा दिया, यू नो, उसके बाद अगरबत्ती ऑफर कर दिया, फिर घी लैंप ऑफर कर दिया, उसके बाद फिर अर्घ्य ऑफर कर दिया, फिर वस्त्र ऑफर कर दिया, फिर टावल ऑफर कर दिया, चामर कर दिया, तो सर मौसम देख के भी ऑफर कर दिया. काम सेट में इधर पीछे में आपका अगर बच्चा है, बच्चा गा रहा है, बच्चा में बजा रहा है, बच्चा करता है, खुद भी आप इधर भी हो जा रहे हो. बस ये थोड़ा शायद आपको फास्ट करना पड़ेगा कि रिपीट नहीं कर रहे हैं ना हम लोग, तो फास्ट होता है. ठीक है, तो आप करो, ट्राई करोगे आपको पता पड़ जाएगा. मतलब लोग ऐसा नहीं कर सकते एकदम. हाँ. क्या सीढ़ी से उधर so now but then point is that ऐसा हर दिन नहीं होता है ना, तो अच्छा उसमें भी ना विटामिन और सिंसियरिटी छुट्टी वाले दिन है कभी, मतलब if we are conscious of it, even though on a daily basis we are not getting an opportunity to do something, whenever we get an opportunity we will want to do it, right? So that's how it is. You can take this question. The question is, if society where my parents live in requires me to spend money for activities like donation for things not related to Krishna, should I give? Okay, so in this question ना, तो उतना डिटेल नहीं लिखा कि किस चीज के लिए दे रहे हैं. There is something which I know. वैसे फैमिली ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है. फैमिली ट्रेडिशन से मेरे यहाँ पे वी केम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस इन 2005, मतलब इस्कॉन से कनेक्ट हुए हम लोग. बट हमारे डोनेशन देने का कल्चर शुरू से है. मेरे पापा का सैलरी आता था, सबसे पहले वो डोनेशन ही करते थे, वो शुरू से कल्चर है. तो राइट कैंडिडेट देखा, उसको दिया. अभी आपके फैमिली में कल्चर है तो दीजिए, लेकिन अगर कहीं पे आपको लग रहा है किसी फैमिली में होता है जहाँ पे ना वो सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है, जहाँ एकदम ही मोड ऑफ इग्नोरेंस का हो रहा है कुछ, तो वहां नहीं हमें करना चाहिए. बट अदरवाइज इट्स गुड टू मेंटेन द फैमिली ट्रेडिशंस. मतलब if it is not against the principles of Krishna consciousness, then we can do it. And secondly, coming to society वाला, so what I am understanding is probably जैसे society वगैरह होता है, layout होता है या apartment होता है, वहाँ कुछ common एक बना दिया जाता है कि भाई security guard will go to every flat and he will collect some donation, right? तो उसमें भी तो use our judgment. हर बार देना भी जरूरी नहीं है, लेकिन कभी भी नहीं दिया then you can become an odd man out which you don't want to be, right? So we have to be socially respectful. So there are some things which are social obligations. We will not never give for wrong things. We will never give for Krishna conscious things. But if there is, let's say, a Ganesh festival है, जैसे पुणे महाराष्ट्र वगैरह में सोसाइटी में अगर आप रहते हो तो गणेश फेस्टिवल के लिए जो सोसाइटी वाले लोग हैं वो आके चंदा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, दे दिया, क्या है, मतलब we don't want, so there are some social obligations are there. और उसमें आप ऐड भी कर सकते हो. ऐसा भी डोनेशन दिया, आपको पता, सबको बता दिए हरे कृष्णा वाले हैं, एक दिन जाइए आप कीर्तन करिए ना साहब, किसी मंदिर से बड़ी को बुला लीजिए, बड़े साहब प्रवचन करिए, उसका प्रसाद बांट दीजिए. Contribute to those cultural programs.
तो आपके सॉन्ग का प्रचार भी हो गया साथ में उसमें। Yes, sir. Yeah. See, we have to use our judgment ultimately. अब कितना जगह हम डोनेशन देते जाएंगे, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, क्योंकि फिर एक के बाद अभी हमारे घर में एक बार हमने एक ऑर्फनेज को डोनेट आगे एक मारुति वैन लेके, तो दे वर आस्किंग फॉर ऑर्फनेज, चलो ठीक है, थोड़ा पुराना कपड़ा वाला था तो दिया. So every week somebody or the other comes. So I had to say, see, every week somebody of you will come. How can I give to everyone? I am already giving a lot of donation. तो हो गया ना तब. So we have to take a judgment. हम कितना दे सकते हैं, और कृष्णा को तो देने ही देना है. इसके अलावा जितना दे सकते हैं दो दे दिया, फिर बाकी नो बोल दिया, तो इसमें कुछ ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्या नहीं, अब क्या करेंगे, प्रैक्टिकलिटी है, सिंपल, उतना ज्यादा भी डोंट हैव टू थिंक टू मच अबाउट. लेकिन हाँ, व्हेन नोन पीपल आर इन्वॉल्वड, सो टू कीप रिलेशनशिप विद देम समटाइम्स वी हैव टू ऑब्लाइज. एंड नोन पीपल आर देयर, जैसे उसी सोसाइटी में आपको रहना है अगले 20 साल 30 साल, so you want to have a respectable thing in society, you don't want to be looked down upon by everybody. अरे ये लोग कुछ करते हैं, कंट्रीब्यूट नहीं करते सोसाइटी के मैटर्स में, राइट? तो वो सब थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है. Next question is, should we eat at the homes of relatives or friends who eat meat, or in the offices or some festival or occasions? अभी यहाँ पे आपको पता है, अगर प्रभुपाद when he went to US और शैली अग्रवाल वाले घर में रहे थे, तब लीला मत पढ़े, तो वहाँ सेम फ्रिज में नॉनवेज रखती थी और सेम फ्रिज प्रभुपाद को यूज करना पड़ता था अपना आइटम्स रखने के लिए भी. इसके बहुत वर्कअराउंड होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हम इसमें कुछ वर्कअराउंड न कर पाए. फ्रेंड्स रिलेटिव्स के यहाँ पे अगर आपको कभी कभार जा रहे हैं, खा के जाइए, बोले भैया, मैं तो क्या करता था, बोलता था कि भाई मेरा फास्ट है, फ्रूट्स खिला दो मुझे. तो किसी घर पे फ्रूट्स खा लीजिए आराम से. तो वहाँ वो वैसे नहीं, आपको खाना ही खाना है, पता पड़ा वो ऑयल में जिसमें वो फ्राई करते हैं उसी ऑयल से आपके लिए कुछ बना दिया. समझ रहे हैं, होता है ऐसा बहुत बार. तो इसलिए हमको वो पॉसिबिलिटीज भी रूल आउट करके ट्राई टू बी लाइक use intelligence basically. And also depends on our relationship with that relative. If we have a close relationship, then we can always request them. If there is a relationship of love, you can tell them that, see, actually मेरे को ये नहीं चलता है, if you don't mind, can you do this for me? Or if you want, we can go cook together. You know, we can cook together. मतलब वो सब थोड़ा, you know, we can. Like अभी तो हम लोग गृहस्थ हैं, like my brother, he's a brahmachari. When he comes to our home, तो हम relatives के यहाँ पे जाते हैं, तो वो तो सिर्फ 6 किलोमीटर चंडीगढ़ डिवोटीज के यहाँ के खाते हैं. तो वी गो टू द होम, मेरी मम्मी मेरी वाइफ और हम लोग मिलकर बनाते हैं वहाँ पे, मेरा भाई सबके साथ बैठ के खाते हैं. सो वी गो एंड कुक. आप उनको भी प्रसाद खिलाइए ना, उनको भी दिखाइए कैसे ऑफरिंग होता है, कैसे हम खाते हैं, कितना बढ़िया प्रसाद बनता है. तो उससे होता है ऑफिस का. ऑफिस और फेस्टिवल्स ओकेजन्स का जो है वो ऑफिस में, बताओ आपको इंडिया में जो है पीयर प्रेशर रहता है कि आप पार्टीज में जाइए ना, आपको खाना ही पड़ेगा. कोई ड्रिंक कर रहा है तो आप भी ड्रिंक करिए. मैं 3 माह अब्रॉड होके आया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं होता है. मेनली व्हेन यू स्टे सेम कंपनी फॉर लॉन्ग टाइम आल्सो ना, उससे भी एक फर्क पड़ता है कि लोग आपको समझ जाते हैं कि ये आदमी ऐसा है, काम में परफेक्ट है. मैं जैसे बताता हूँ आपको, मैं कंपनीज के टीम गैदरिंग्स होती हैं, आज हमारा गोल है वो प्रोजेक्ट का, सो आई गो देयर, मैं जाता हूँ वहाँ पे, बट आई डोंट गो फॉर ईटिंग. मैं उससे भागता भी नहीं हूँ, उनको ये भी लगना चाहिए कि ना करिए तो निकल लिया यहाँ से. मैं उसका पार्ट रहता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग देयर टू फॉर ना ड्रिंकिंग एंड बूजिंग एंड ना, तो उसका एक को पकड़ के सबको कैब से छोड़ना पड़ता है. यहाँ वो पी के पड़ा हुआ है, वो पी के पड़ा हुआ है, क्योंकि वो लोग उसके लिए जाते हैं. लोगों को पता है ये आता है और टीम बॉन्डिंग के लिए आता है. सो बी लाइक अ जेंटलमैन और बी हैप्पी. And they'll appreciate. And in corporate world, they are all the more sensitive about not interfering in your personal life. They will never. That's the ethics of any corporate in today's world, right? And everybody is supposed to be respected. Everybody is supposed to be acknowledged and appreciated for whoever they are and wherever they are. So we can always present our stand. But as he very perfectly said, कटना भी नहीं है एकदम, और प्लस उनको नीचा भी नहीं दिखाना है. तुम लोग जो है I don't want to contaminate us. हम लोग का false ego भी बहुत बार, you know, makes us speak. No, it's okay. I already don't take these things. I stay away from these things, but I will still come because it's a team celebration. And I very much want to. क्योंकि company वगैरह में ना team dynamics is important. You don't want to be left out. You know, it will be not good for your career in future. और जो कुछ और स्मार्ट होते हैं ना जो लोग, वो क्या करते हैं, मैंने एक अपने फ्रेंड को देखा, फिर मैंने भी इम्बाइब किया है क्वालिटी के, कोई आपका मजाक उड़ाए उसके पहले आप अपना मजाक उड़ा लो. ठीक है, तो ऐसे कई लोग होते हैं, बाहर के लोग तो नहीं करते फॉरेनर्स, बट कुछ इंडियंस का हमारे टीम में था कुछ, वो आपको कुछ ना कुछ तो बोलता रहेगा, अरे ड्रिंक तो कर लो ना, थोड़ी नॉन वेज है,
ये तो गेहूं से बनता है, तो चावल से बनता है। हाँ, अंगूर से बनता है, तो अंगूर का है, दे दो देवता भी पीते हैं। तो मतलब क्या है, अरे भाई मैं देवता नहीं हूँ, आप देवता है, आप भी सकते हैं। तो ठीक है, तो आप वो आपका मजाक उड़ाए, उसके पहले आप अपना खुद का मजाक उड़ा लीजिए। मैं ऐसे आई वेंट टू इटली, तो वहां पे क्या था कि दे ऑल स्पीक इटालियन, तो रेस्टोरेंट में गए कहीं पे खाने के लिए, तो मैं पूछता था वहां पे कि आई डोंट वांट फूड विदाउट दिस 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 सब कुछ लाइन लगा दिया, सब कुछ नो हो गया। तो वो जब वो वेटर आता था देखता था कि इसको कुछ नहीं चाहिए, तो मतलब समझा कि उसको फ्रूट चाहिए। तो वो पढ़ के ना हंसने वाला है, उसके पहले मैं हंसता था, मैं कहता था कि आई नो कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट सच आइटम, सो बेटर गेट मी सम फ्रूट्स। और मैं हंसने लगता था, तो वो अप्रिशिएट करते थे, ले आते थे। तो ये स्किल्स है, धीरे धीरे सीख जाते हैं। एंड आई हैव आल्सो लर्नड हार्ड वे। पहले मैं कभी कभी लड़ाई करता था ऑफिस में, अरे ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, बाद में पता पड़ा कि बिस्किट खाना पड़ गया। अब वो देख रही तो कल बोल रहा था बिस्किट नहीं खाता है। तो उस तरह से हम केयरफुली यूज इंटेलिजेंस एंड थिंग्स वर्क। हाउ टू बिकम गुड एट द आर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स। हाँ, ये बहुत एक्चुअली वाइटल एक टॉपिक है नितिन सभा कैंप का, रिलेशनशिप्स के ऊपर, क्योंकि हम सब ह्यूमंस, हम पत्थर नहीं है, और वी इंटरेक्ट विद ईच अदर। और रिलेशनशिप्स का एक आर्ट है, एक बहुत बड़ा आर्ट है, जिसमें हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। बिकॉज पर्सनली आई हैव बीन इनटू स्टडीज फ्रॉम माय चाइल्डहुड। ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट भी नहीं किया, ये भी कल्चर हमको नहीं समझ में, मतलब ऑब्जर्व भी नहीं करते थे ना कभी इतना, कि मम्मी पापा बैठे हैं तो ना, कि अगर वो ऊपर बैठे हैं तो हम नीचे बैठे हैं। लेकिन अभी वो चीजें समझ में आती हैं धीरे धीरे। तो रिलेशनशिप्स क्या है, ये बहुत एक सटल चीज है, एंड वी लर्न बाय ऑब्जर्विंग फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमेशा ऑब्जर्व करिए, ये घर के ट्रेडिशंस हैं, मम्मी पापा कैसे बिहेव करते हैं, सदाचार क्या होता है, समाज में जाते हैं तो कैसे बात करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कभी किसी शादी का कार्ड आता है तो बोलते हैं कि आपको आना ही है, ठीक है, नहीं तो वो कई बार ऐसे बोलते हैं, यूपी में खासकर होता है, ये कार्ड देखेगा बोल के नहीं गया भैया शादी में आना। हाँ, तो लोग कहते हैं हमको तो बोले ही नहीं, कार्ड पकड़ा गया आगे बस। हाँ, या फिर फैमिली नहीं दिखाता। तो ऐसा बहुत यहाँ यूपी बहुत होता है सब परिवार में। तो ये सब क्या है, ये सब चीजें हमें एज पर अवर कम्युनिटी, एज पर अवर सोसाइटी, ये सब हमें समझना चाहिए। फर्स्ट इज कि हमारे फैमिली के अंदर में रिलेशनशिप हो, फिर सोसाइटी के साथ भी। तो ये ऑब्जर्वेशन से आता है, और देख देख के सीख सकते हैं काफी चीजें। बाकी सेमिनार्स होते हैं इस पे, बहुत इलेबोरेट है वो टॉपिक। एंड फर्स्ट इज हस्बैंड वाइफ का, तो उसके लिए भी कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, कीप कृष्णा इन द सेंटर। तो एक दूसरे के अच्छे के बारे में सुनिए, लेट द अदर पर्सन बेस्ट कम आउट। ऐसा रिलेशनशिप के बारे में ऐसा होना चाहिए हमेशा। ऐसा ना हो कि हम ऐसा रिलेशनशिप हो जाए कि उसे गंदे गंदा बाहर निकालें। ऐसा हो कि वो भी बेस्ट करे, हम भी बेस्ट करें, जो मुझ में कमी है वो पूरा करे, जो उसमें कमी है वो मैं पूरा करूं। दैट इज द पर्पस ऑफ रिलेशनशिप। उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। Parents undergo a lot of trauma, mental plus social, if we decide to do intercaste marriages. We change decision. Like if a Brahman tries to marry someone from lower caste. So I think ये दो केस में होता है, या तो मैरिज बोर्ड से आ रहे हैं या फिर लव मैरिज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी उसमें इंटरकास्ट का आएगा कंसिडर। अगर घर से जाएंगे आप ट्रेडिशन से अपने, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। अगर आपका रिकमेंडेशन वैसे है कि ना इंटरकास्ट करना है, तो वो भी सिचुएशन टू सिचुएशन देखना पड़ता है। क्योंकि जब शादी होती है ना, तो सिर्फ दो लोगों की नहीं होती है, वो दो फैमिलीज की शादी होती है। अभी आप सोचिए कि कोई नॉर्थ इंडियन यहाँ का, हमको रोटी नहीं मिलता तो हमारा पेट नहीं भरता, ठीक है। आप साउथ में चलिए, राइस नहीं मिलेगा तो उनका पेट नहीं भरेगा। कर्ड राइस होना चाहिए, छाछ होना चाहिए, है ना। हमारे यहाँ पे अगर दाल रोटी नहीं मिला, सब कुछ खा ले, तो भी लगता नहीं कुछ खाया है। अब ऐसे दो लोग शादी कर ले तो क्या होगा घर में। तो ये जो इंटरकास्ट मैरिज का सिस्टम और ये इंटर रिलीजन जो भी इंटर वो सब इसलिए है कि आपके थॉट्स मैच करें, आपके घर में सद्भावना बनी रहे और पीसफुल रहे माइंड, कि आप कृष्णा की तरफ अग्रसर हो सकें सब लोग साथ में। ये सब कुछ इसीलिए होता है कि सब कुछ पीसफुल रहे। अभी मान लीजिए पीस उड़ गया घर, तो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपकी कास्ट ब्राह्मण कास्ट है, ब्राह्मण कास्ट मिल गया, और ब्राह्मण कास्ट साउथ की मिल गए, ब्राह्मण है दोनों,
लेकिन अलग अलग हो गया। वहां ब्राह्मण कैसे होते हैं कि आपको चरणामृत लेना है तो 3 ड्रॉप, मतलब 3 ड्रॉप ही होते हैं, वो चौथा नहीं गिनना चाहिए ना, वो 2.5 गिनना चाहिए, उसके मंत्र होते हैं। तो कहेंगे नहीं आपने तो ना कम किया ज्यादा किया, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं। और इट्स फॉर फैमिलीज, तो पेरेंट्स को भी हमें कॉन्फिडेंस में लेना ही चाहिए। दैट्स ऑलवेज फॉर श्योर। अगर आपको जाना ही है इंटरकास्ट के लिए तो भी पेरेंट्स हाँ करने चाहिए, क्योंकि कोई भी, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, लाइफ में 2-3 साल शादी के वक्त से जाते हैं, उसके बाद सब ये जो बादल बादल होते हैं सब छट जाते हैं। उसके बाद में एक्चुअल टीम वर्क चालू होता है। जब टीम वर्क चालू होता है तो लड़ाइयाँ भी होती हैं और फिर पैचअप भी करने पड़ते हैं, सब कुछ होता है। कई बार लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि फैमिलीज को आके रिजॉल्व कराने पड़ते हैं। अगर यहाँ हमने फैमिलीज कट कर दिए तो क्या होगा, कि 2 लोग रह गए बस। इसलिए शादी में समाज बोला जाता है कि समाज साक्षी होता है शादी का, कि भाई तुम हमारी शादी में आए थे, तुम्हें देखा था शादी हुई थी है, तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारी शादी को बचाना। सो दिस इज, ये ट्रेडिशन हमारा इंडियन कल्चर इसीलिए। नहीं तो यूएस में क्या है, 25 लोग आते हैं शादी होती है, उससे बड़े तो बर्थडे पार्टी यूज होते हैं हमारे यहाँ पे। so that they can come to your marriage. अगर कम गेस्ट हो रहे हैं आपके, तो ऐसा एजेंसी होता है, ऑनलाइन सर्विस वगैरह होता है, उनको घंटे के हिसाब से आप पेमेंट करो तो they will come to your marriage. Increase the number of guests. So hopefully I answered this question. बाकी details you can it's like personal. I'll just add one more thing here. Actually, compatibility is very important, and compatibility, as he rightly said, is not just between two individuals. It's about also family, because otherwise it may be bad for the girl also, na? So let's say you are marrying and girl is coming here, you know, and if you are like, if your family very much is attached to some family values and some expectations from daughter-in-law and things like that, एक तो वो दूसरे कास्ट की, उसको भी वो समझ पाएगी नहीं समझ पाएगी, it will be a big torture on her, right? So therefore, even if parents are against, we can, you know, very nicely explain to them, you know, and we can together understand consequences of this way and that way, and all parties should be flexible in these matters. Now we should never be very, very rigid. You know, we should always be open to suggestions, and we should always understand ki, am I being rigid, are parents being rigid, you know, and we should be flexible, and purpose should be achieved. And in general, obviously, you know, same caste, same these things are good for compatibility, you know, in general, obviously. Okay, I'll take these 2-3. How to know before marriage, marrying a girl, that she is not lusty and have good values? We are also lusty, na? Once Narisham Prabhu came to Bangalore, he was asking, you know, how many of you don't feel agitated when you see opposite sex? And only 1 or 2, he had asked, how many of you don't feel agitated when you know, see somebody of opposite sex? And then, you know, nobody raised hand. He said, Rajam said, I bow down to you because only Nar Narayan Rishi can say that, you know, that they don't feel agitated. Otherwise, everybody in this world gets affected. Vishwamitra le lo, koi bhi le lo, Saubari Muni le lo, everybody gets affected. So you don't even try to create such a test to check whether she's lusty or not. You only will get failed in that test, right? So, but what is important to know, probably what he's asking is whether she is having good Indian values. You know, is she very corrupt kind of so-called modern, एकदम, you know, उस type की? तो वो तो आपको उठने बैठने पहनने ओढ़ने के तरीके से पता चल जाएगा, हॉबीज से पता चल जाएगा, सैटरडे संडे को क्या करती है, घर में कौन कौन है, एंड व्हाट आर हर हॉबीज, लास्ट पिक्चर उसने कौन सी देखी थी, उससे पता चल जाएगा. इफ यू आस्क डू यू वॉच मूवीज, तो एनीबडी विल नो व्हाट इज द राइट आंसर हियर इफ शी वांट्स टू इंप्रेस यू. You ask, what is your favorite movie? You should always ask open-ended questions so that you can actually know the real thought process. Never ask a question which has a right answer or a wrong answer. Never ask that question. Ask open-ended questions. So then you will know. Plus, खाली लड़की को नहीं देखना पड़ता, लड़की की फैमिली, उसकी मदर, वो लोग घर में आपस में एक दूसरे से कैसे बिहेव कर रहे हैं, घर क्लीन था क्या? Like I always tell my son, whenever in his fair copy he does not write nicely, you know, sorry, in his rough copy he just does something like that only. I said, ये क्या लिखा है? तो बोलता है, पापा ये तो रफ कॉपी था. मैं बोला, अगर देखना है कि कोई अच्छा काम करता है कि नहीं, तो क्या देखो? रफ कॉपी देखो उसकी. अगर तो वो मेरे को बोलता है, हाँ, जैसे आपने बताया था कि अगर देखना है कोई अपना घर क्लीन रखता है कि नहीं, तो उसका क्या देखो? टॉयलेट, बाथरूम, राइट? तो सिमिलरली एक लड़की के बारे में उसकी मदर को देखना पड़ता है, उसके भाई बहन है कि नहीं. देयर आर मेनी थिंग्स. तो मे बी एक्चुअली वो एक अलग सेमिनार होता है, हाउ टू चूज अ लाइफ पार्टनर, व्हाट टू सी, व्हाट नॉट टू सी, व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज सेकेंडरी. So we can discuss sometime, but principle wise, as I said, that you know, there are some basic things we can check, you know, and we go ahead. Sometimes you find some conflicts in what our brahmachari counselor says and what we hear in NS classes. Example, brahmachari devotee will tell us
to have simple living means no luxury. How to understand? So brahmacharis are not supposed to tell us details about Grihastha ashram. It's a known fact. So it's very simple that only Grihasthas can tell details about Brahmachari can tell principles from Shastras. But when it comes to execution, a Grihastha is supposed to take guidance from Grihastha only. Now, no luxury, these things, they don't work. They look nice, but as I said, you have to be socially respectable. It's not that you can't have sofa, you can't have nothing in life, you're just a mat, chatai. Right? Who you were telling yesterday, one father-in-law came after getting her daughter married, and when he came home, he was shocked that the chair bhi nahi tha. The father-in-law only went to the market and purchased a chair and gave to the son-in-law. Bhaiya, chair le lo. That is one. Second, definition of luxury is relative. What is luxury for me may not be luxury for you. Depends on our economical status, financial status, किस तरह के relatives आते हैं. अब जैसे हमारे मफतलाल प्रभु हैं, कृष्ण चंद्र प्रभु, उनका घर और हमारे घर में जमीन आसमान का फर्क होगा, तो हम बोलेंगे वो एकदम विषयी आदमी, एकदम घुस गया है, मतलब एकदम पैसा चढ़ गया उसके सिर में. अरे किस तरह के लोग के साथ आप उठते बैठते हो, उस हिसाब से आपको मैं बता रहा, socially respectable. So those things are very, very important to understand. So there is never, most important thing to understand in life is that there is no one size of shoe which fits everyone. One man's food is another man's poison. Should we put tilak in office? We may, depends on what is your standing in office. Depends on how would people, if you are a very new person, young person, anyway, you are not confident about what you are going to do, you are already feeling lack of confidence in terms of your abilities and performance. So better you can avoid, if you don't want to unnecessarily enter into chorus. Already आपका performance पे question mark लगा है. अब ये सब करके फिर, maybe अगर कोई misunderstand करे. So point is, we don't have to be fanatic. If you feel that, it's my personal life, I can put tilak and I can handle that situation, put tilak and go to office. If you feel that नहीं तिलक लगाऊंगा लोग क्या बोलेंगे, मत लगाओ ना, फिर सारा जगह छोड़ के ऑफिस में ही लगाना है क्या? अरे सुबह सरात घर में लगाते नहीं, ऑफिस हमको तिलक लगा के जाना. अरे दिन भर में और भी तो काम होता है, मार्केट जाते हो लगा के जाओ तिलक को, इसको क्या मतलब? तो क्या होगा, उससे प्रीचिंग करता है, बैंक जाओ, बैंक जाना है तो कुछ पूछ लगता है व्हाट इज दिस तिलक, क्योंकि वहां पे यू हैव नथिंग टू लूज, यू सी, राइट? So then we have to be a little careful. लेकिन हाँ, आप ही मैनेजर हो, आपका परफॉर्मेंस is speaking for itself. Nobody will misunderstand these things, right? तो लगा के जाओ, no problem. So it's relative. It depends on who you are and what is the role in your company, how people are looking at you in the company. How purification happens in Grihastha ashram? By taking many responsibilities. You don't unnecessarily take more responsibilities. There are some duties which have to be done. जितना discuss किया वो बहुत है, और कौन सा लेना है आपको नया? This is more than enough. And this, by doing this, how purification happens? Because this requires pain, this requires trouble, right? This requires struggle. This does not come easy. And going through that struggle creates purification. How is 4 hours distributed for soul? Wo ho gaya. Can we get the PPT of these sessions? Yeah, we can share. I will just tell Neil, I'll give to Neelmani Krishna Prabhu and somehow we'll create some for us. Let's protect next. Oh, sorry. Question is, I want to preach to people around me, but I can't relate to them. How should I improve myself? So always our preaching should be aligned in the principle कि audience को क्या चाहिए. अब ये नहीं कि ऑडियंस सिर्फ चाहती है डांस करो, डांस करने लगे हम, नहीं वो नहीं, बट ऑडियंस का रिक्वायरमेंट क्या है. लाइक इफ यू सी मैराथन जो हमारा होता है, ये कैसे स्टार्ट हुआ था? थैंक्सगिविंग का भी मंथ होता है यूएस में, सब लोग एकदम शॉपिंग के मूड में निकलते हैं, तो मैराथन वहां से स्टार्ट हुआ. संडे फीस्ट भी वैसे ही स्टार्ट हुआ कि एकदम वेजिटेरियन मील लोग लेने के लिए आएंगे. सो प्रभुपाद नहीं हो कि ऑडियंस को क्या चाहिए है, और वो उन्होंने उसको पैलेटेबल बना के उसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस फिट किया. सो वो हमें आना चाहिए. हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ? बाय ऑब्जर्विंग पीपल के लोगों का नीड क्या है. और एक बहुत अच्छा तरीका होता है प्रीच करने का कि आप जेन्युइनली प्रैक्टिस करिए, जेन्युइनली अपने आप को कैरी करिए. ऑफिस में मैं कभी नहीं बोला कि मैं कौन से हूँ, लेकिन सब लोग जानते हैं कि मैं कौन से हूँ. और मैं ऐसे प्रॉब्लम बता, तिलक के लिए मैं तिलक नहीं लगा के जाता था, लेकिन जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन करने जाता हूँ बुक्स को दिसंबर मंथ में, मेरे कितने कलीग्स रोड पे मुझे मिलते हैं और 2-3 बुक्स लेके आते हैं, और फिर ऑफिस में आते हैं और ऐसे करते करते 500-600 बुक्स मेरा मंथ में हो जाता है आराम से. जिससे मतलब क्या है कि मैंने कभी बोला नहीं, बट लोगों को पता है कि पर्सन है, जेन्युइन है. प्रीच बाय एग्जांपल, और उनका नीड क्या है वो पता करके
वी कैन प्रीच देम एक्सक्लूसिवली अगर कोई आता है इंटरेस्ट लेके, या फिर कभी कभी कुछ लोग बुक्स भी रखते हैं डेस्क पे, अपने टेबल पे रख लिया आपने, तो हो जाते हैं. सो you have to be very careful in today's modern companies, especially big companies. Secular. That some things are not allowed. So we should be careful. We should not unnecessarily try to do all preaching in our office only. Therefore, many devotees suggest preach in other offices. Other offices. इतना सारा company होता है, अपने ही company में अपने ही table पे बैठे. So these things depend on. You have to be sensitive. You have to also be like if for some things we have to be smart to not do self damage. बैल मुझे मार. ऐसा नहीं करने का जरूरत है. Because some things can be really, really offensive, because these days companies are becoming really, really serious about, not showing off your religious sentiment. उन लोग के लिए religion है ना, वो थोड़ी अब उसमें जाएंगे religion, spirituality है ना. तो उन लोग के लिए religion है, and then they may be, it may be offensive to others. So ऐसा पहले चलता था इंडिया में, अब ये सब नहीं चलता, because these multinational companies are very, very serious about certain things, about respecting people for who they are and not hurting anybody's sentiments. And that can be in our favor also. That means we can be who we are. At the same time, we have to be extra conscious, in professional environments. और सारा कंपनी थोड़ी एक साथ उनको भक्त बनाना है. 1-to-1 फ्रेंड्स होते हैं ना हमारे बहुत सारे, हमको पता होता है कि बस इसमें आराम से मंदिर बुलाइए, प्रसाद खिलाइए, घर पे बुलाइए, उनको दिखाइए हमारे घर पे देखिए ऑल्टर है, कैसा फैमिली है हमारा, घर पे धोती कुर्ता पहन के रहिए, तो दिखा सकते हैं हम लोग उस तरह से. तो बस 1-to-1. Now this is a big question. Hare Krishna Prabhuji, thank you for the valuable time and association. Prabhuji, I am running a company and we have many clients from outside India and India also. Sometimes we get projects like restaurant sites development, e-commerce also. Got it. Sometimes have veg and non-veg. Sometimes we get sites like Dream 11, Ludo game, which has like a betting system. Sometimes we get tools, and often we come to know that client use money for wrong purpose, like showing porn, etc. Should we close project and whatever money comes, give it to donation? So we are fully surrounded by 4 hours meeting, gambling, 4 everyday principles, something like that. Prabhuji, please help how to take decision. So in short ये है कि जो हमारे 4 everyday principles violate करते हैं, वो वाले jobs में करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए. तो कुछ होते हैं जो I'll just speak it when Prabhuji can give some expert on that. So from my understanding, कुछ होता है जो आप डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हो कि ब्लैक एंड व्हाइट कि ऐसा है, ये नहीं करना है. Like for example, I know one devotee, he got offer from a company which makes tobacco. बड़ा पैकेज मिला उनको, छोड़ दिया कि मैं नहीं करूंगा इसका काम. अभी थोड़ी कम मिल रहा है, मैं तो चेंज कर रहा था इसलिए कि सैलरी हाइक हो जाए, बट उसके लिए मैं ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता. दूसरे डेवोटी को यूएस में जॉब मिला, कंपनी का नाम था बोर हेड. तो वो एक्चुअली बोर हेड वो स्लॉटर हाउस कंपनी था, वो बोर का हेड लेके ही बेचते हैं वो. ठीक है, अब उनका आईटी में काम है उनका, बट कंपनी इज ऑफ दैट ओनली, कंपनी उसका ही काम करती है. सो ही वाज डिलेमा कि मैं तो आईटी में काम कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए. ही डिसाइड कि ही विल नॉट वर्क फॉर दैट. सो वहां भी अपने मेक सम स्मार्ट डिसीजंस. किसी का अब अल्कोहल कंपनी में लग गया, हैनिकेन में जॉब लग गया, लाइक सम मैकेनिकल इंजीनियर्स. हो सकता है किसी का ब्रूअरी में जॉब लग जाए, ब्रूअरी में जॉब करें, ऑप्शन मत करिए. ठीक है, लेकिन एक हमारे पास ऑप्शन भी तो बची ना दूसरा. अब ऑप्शन ही नहीं है, जॉब नहीं मिल रहा है और फिर बैठे हुए हैं कि ना कि भाई इसमें जॉब ना करें, तो वो भी एक देखना पड़ता है उस समय काफी चीजें. सेकेंडली, अब जैसे मेरा कंपनी है श्लम्बर्जर. सो अब हमारा कंपनी में ऑयल ड्रिल करते हैं. सो 95% ऑयल वेल से ऑयल हमारी कंपनी ड्रिल करता है. ठीक है, पहला ऑयल वेल उन्होंने खोदा. अब ऑयल आप देखोगे तो दुनिया में सब जगह ऑयल यूज होता है, तो मैं जॉब ही नहीं करूँ उसमें. ट्रक भी ले आता है तो वो जो पोल्ट्री वाला ले आ रहा है उसमें तो तेल फट रहा है ना. तो ऐसे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हर फॉर्म में आपका गड़बड़ होनी ही होनी है. उसीलिए हम डोनेशन का पार्ट लाते हैं, डोनेशन देना ही देना, चैरिटी वो प्यूरिफाई करेगा ही करेगा. तो समवेयर वी हैव टू स्ट्राइक अ नो, डायरेक्ट नो, कि कंपनी उसका ही है तो नो. जहाँ पे ग्रे जोन है वहां हम चैरिटी देते ही हैं. सो इफ यू हैव दैट प्रिविलेज कि आप इस प्रोडक्ट को मना कर सको, जैसे फॉर एग्जांपल राधेश्याम कोर्स दिस एग्जांपल मेनी टाइम्स. कुछ जैन लोग होते हैं, जैन लोग आपने अहिंसा अहिंसा अहिंसा, ठीक है, बट जैन लोगों के सबसे ज्यादा ये स्लॉटर हाउसेस हैं, आपको पता है यूपी में स्लॉटर हाउस उनके बहुत ज्यादा है. तो उसके अलावा मनी मिलता है. ठीक है, फिर उसके अलावा बुक्स हैं. मैंने एक किस्सा सुना था जिसमें वन पर्सन ही हैज अ बुक स्टोर एंड प्रभु जी ने बताया, सिंपल बताया कि ना कि
बुक स्टोर है और बुक्स उसने सारे जिसमें से ना फिशिंग की जो बुक्स होते हैं कि हम फिशरी चलाना है हमको, पोल्ट्री फार्म चलाना है हमको, उससे बुक्स भी आते हैं। उसके हम ये सब बुक्स नहीं रखेंगे अपनी दुकान पे। तो उस तरह से वी कैन मेक स्मार्ट डिसीजंस। एंड So very nicely, Ambrisha has answered that wherever there is a direct connection, and if you can say no, better to say no. But in this particular question, I understand that he is the owner of the company, and he is actually in that situation. Now again, as he said that if there is no other choice, and if our company is anyway is doing good things also, but some people are misusing it. It's not that our company stands for that. We are real estate company. We are creating plots and sites for people to build different things there. Now, some people are building good restaurants also. Some people are building that restaurants. So, हम क्या कर सकते हैं? The moment I have sold my contract, the moment I have taken money, it's over, finished. Now, वो उसके ऊपर क्या करे? This way, karma is like very intricate. Now, we can't get into too many details, right? So there we have to just remember that since we are surrendered to Krishna, we are trying to surrender to Krishna. We are giving the results of that money to Krishna. जैसे प्रभोग का है ना, Krishna says, what is that shloka? Yagya shishta sinha santo muchyante sarvakil vishay, right? Without offering it is sin. Similarly, therefore, our money could involve so much sin, and therefore we have to offer to Krishna. Hare Krishna Prabhuji, what are your views about wearing kanthi mala in office? See, kanthi mala थोड़ा ज़्यादा, kanthi mala ऐसी चीज है, it's like our part of our body in one sense, एक तरह से हम बार बार खोलते बंद करते नहीं है, तो उसको पहने रहने में कोई दिक्कत नहीं है. In general कवर हो जाता है, नहीं भी कवर हुआ तो that's fine. See, some things are anyway part of Indian culture. तो उसमें honestly we don't have to be too much guarded also, right? तो बहुत लोग कुछ ना कुछ पहनते ही हैं. तिलक के साथ क्या हो जाता है कि इन जनरल इंडिया में इतना बड़ा चमकदार बड़ा तिलक ऐसा नहीं लगाते. कोई थोड़ा टिक लगा देता है, कोई ऐसे कर देता है, वो सबको चलता है. साउथ इंडियंस तो हर साउथ इंडियन कुछ ना कुछ लगाते हैं. तो तिलक थोड़ा एक अलग से देखने में आ जाता है, राइट? अगर कंठी माला वगैरह तो अपना पर्सनल लाइफ है, कोई कुछ भी करे, भैया हम 5 अंगूठी पहने, 2 अंगूठी पहने, कंठी माला पहने. सो हर चीज को लेके वी डोंट हैव टू बिकम अल्ट्रा सेंसिटिव आल्सो. देन वी विल ओनली कीप लूजिंग अवर आइडेंटिटी एज अ डिवोटी. वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज अवर आइडेंटिटी एज अ डिवोटी दैट वे. We need to go to marriages, other functions of family for a few days. Cooking is done by cook for all gathered people. What can be done there? Should we insist on cooking separately? Grihasthas typically cannot follow this standard कि भैया हम तो एक जो प्योर डिवोटी जो कुकिंग करेगा वो भी प्रेम से, और वो जब भगवान को ऑफर करेगा और वही प्योर डिवोटी जब सर्व करेगा हम तभी खा पाएंगे. Grihasthas don't and can't follow this standard. कुक अगर कुक कर रहा है तो आपका वो बड़ा सौभाग्य है, कम से कम आप जानते हो कौन कुक कर रहा है, राइट? और हाँ, नॉनवेज नहीं खा सकते, आउट ऑफ क्वेश्चन है. अनियन गार्लिक नहीं खा सकते, आउट ऑफ क्वेश्चन है. तो अगर वो कुक वेजिटेरियन कुक कर रहा है और विदाउट अनियन गार्लिक कुक कर रहा है, और अगर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो जिस भी फंक्शन में गए हो, अगर आप बोल सकते हो कि आप थोड़ा ऑफर कर सकते हो क्या इसको, इनफैक्ट इंडिया में तो अभी ये सब बहुत अच्छे सेंटिमेंट्स हैं ही, राइट? तो वो भी कर सकते हैं. नहीं भी हुआ तो वहां पे आप ऐसी चीजें खा सकते हो जिसमें अनियन गार्लिक नहीं हो. और अगर ऐसी बिना अनियन गार्लिक वाली चीजें हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल ली, खा लिए, क्या कर सकते हैं. See, that's why ना गृहस्थ आश्रम में there are some social obligations which we have to do, and we don't have to be too fanatic about some things. What is more important is sincerity of our purpose. You will be, एक होता है, see, जो standards होते हैं ना, when it comes to standards, we don't have to be too attached to those standards when things are not in our hands. Rather, in our home, let us try to follow all principles properly first. We are many times lose there, and then mind first gives this question. ये हुआ तो क्या होगा? अरे पहले हम अपना डेली कर रहे हैं, तो अपने आप जब ये होगा तो भगवान कुछ ना कुछ रास्ता दिखा देंगे. जैसे बच्चों के को आप स्कूल जब भेजते हो तो बहुत होता है, कोई स्कूल में कुछ पार्टी है तो सबको कोई केक लाया है, बच्चों को केक दे रहा है. आप तो फिर भी अपने आप को जो बोल सकते हो बोल लोगे, बच्चों को क्या बोलोगे? तो उस केस में क्या करना पड़ता है? बच्चों को ही पहले से टिफिन बना के दे दो केक, so that the child does not feel कि बाकी सब केक खा रहे हैं, मैं केक नहीं खा रहा हूँ. So therefore another reason why mother should be an expert cook. बच्चे को किसी चीज, पिज्जा का कमी नहीं होना चाहिए, मैगी का कमी नहीं है, ये चाउमीन का कमी नहीं होना चाहिए, फिर अपना क्या और होता है, जो भी होता है मान लो, सब चीज she should mother, it will be nice, it will be wonderful if the mother can cook nice things और किसी चीज का कमी ना लगे. होटल रेस्टोरेंट जाने का मन ही ना करे, लगे क्या इससे अच्छा तो घर में बनता है. You see, that will be really successful. आर्टिफिशियली सप्रेस करने से ज्यादा आगे नहीं जाएगा, बच्चा एंटी हो जाएगा उल्टा. लेकिन अगर उसको ये फील करा दिया जाए कि अरे घर का खाना बेस्ट होता है, और सच में ऐसा हो, और उसके लिए कौन लगेगा? मदर, अच्छी मदर लगेगी. Okay, I'll take this last question.
आपका चिट है क्या? Okay, then we'll take more live questions then. How should I increase my maturity in dealing with my family members and also the society? So Ambrisha gave nice answer about the relationships aspect. उसमें मैं दो चीज ऐड करना चाहता था, so this question will allow me to add that. He said from the perspective of our formal relationships, when we have relationships and we have to maintain those relationships. I'll answer from the perspective of actual genuine human to human relationships. इसको बोलते हैं जैसे we should improve our relationship with a devotee, we should improve our relationship with a wife. तो उसमें if we remember two principles, we can become king of relationships. Do you want to know? Principle of duality and principle of diversity. And as he said, there is a detailed seminar. There are many more things. I have prepared one presentation in which I have talked about some 10-15 sutras of relationships and things like that. वो सब हम लोग कभी कर सकते हैं. But अगर ये सबको summarize करना है और एक 100 सुनार की एक लोहार की वाला है, तो ये दो है, principle of duality and principle of diversity. What is principle of duality? Everybody has plus and minus in him or her, right? Except for Krishna. Krishna is all plus. There is no minus in Krishna. Other than that, Shivji, everybody, वो है ना वो समुद्र मंथन pastime, when Rama comes out, right? When Lakshmi ji comes out, she's searching. उनको दुर्वासा में कुछ अच्छा दिख रहा है पर कुछ खराब भी दिख रहा है. शिवजी में कुछ अच्छा दिख रहा है पर खराब भी दिख रहा है. अरे इसमें ये अच्छा है लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है. ऐसा करते करते finally she had to come down to Lord Vishnu only. So principle of duality says that every individual has some strengths and some weaknesses, some plus and some minus. So इसलिए when you are relating with anybody, neighbor, family member, whoever, उसका अगर कोई आपको माइनस दिखे ना तो तुरंत पुलिस मत बन जाओ. पकड़ा माइनस तुम्हारा, चलो जेल. नो, आप उसके अंदर कुछ माइनस है, आपके अंदर भी कुछ माइनस है. So the success of a relationship is that we focus on the plus and we make the minus insignificant. Especially for grown up people. जैसे एक हस्बैंड है, एक वाइफ है. वाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है और हस्बैंड के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है. अगर हस्बैंड बार बार वाइफ की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट ही करता रहेगा तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी. पर अगर वो उसको इस तरह से वर्क अराउंड करे कि वो प्रॉब्लम्स जो है थोड़ी थोड़ी इनसिग्निफिकेंट होती चली जाए, क्योंकि वो स्ट्रेंथ पे फोकस करे. कुछ तो अच्छा होगा वाइफ में, कुछ तो अच्छा कर पाती होगी, कभी तो खाना अच्छा बनाती होगी, या कुछ नहीं तो कुछ भी होगा. कोई अच्छा नहीं है तो फिर शादी क्या किया, मतलब कुछ तो देखा होगा ना. तो उस चीज को हम अप्रिशिएट करेंगे तो रिलेशनशिप अच्छा होता चला जाएगा. और माइनस को हमेशा पुलिस नहीं बनना है हमको. हम हमेशा अपने आप को पुलिस समझ लेते हैं. किसने हमको पुलिस बना दिया कि सामने वाले में हम कमी निकाल रहे हैं, राइट? बच्चों के केस में बात अलग है क्योंकि बच्चों को हमको करेक्ट करना होता है. बड़ों के केस में यू कांट टेक द लाइसेंस टू करेक्ट अनलेस यू हैव इन्वेस्टेड इन द रिलेशनशिप, राइट? तो एक ये प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी. तो इसलिए अगर सामने वाला कुछ अगर परफेक्ट नहीं कर पा रहा है तो वी हैव टू टॉलरेट, वी हैव टू एडजस्ट, वी हैव टू अकोमोडेट. जैसे हम कार खरीदने की कोशिश करते हैं ना, सबसे बड़ी कार है स्वीकार करना है सामने वाले को, जैसा है वैसा स्वीकार करना है, तभी चमत्कार होगा, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा. तो ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी. एक दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी. एवरीबडी इज डिफरेंट. सामने वाला जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा सोचे जरूरी नहीं है. मेरे लिए अगर ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है सामने वाले के लिए भी वही इंपॉर्टेंट हो. ये अगर हम समझ जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली थोड़े अकोमोडेटिव हो जाते हैं. कुछ तो सो ये जब होता है तो हम ऑटोमेटिकली अकोमोडेटिव हो जाते हैं, कंसिडरेट हो जाते हैं, काइंड हो जाते हैं. कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था पर शायद उसके लिए नहीं था, तो ओके लेट मी, शी इज नॉट सीइंग द वर्ल्ड द वे आई एम सीइंग द वर्ल्ड. एज इट इज मेन एंड वुमेन आर कंप्लीटली डिफरेंट. मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस. वो अलग सेमिनार है. लेकिन in general any two individual के लिए भी ये true है कि they are not seeing the world in the same way, so therefore we should be kind and considerate, like that. So these things we follow in our life, and there are many more things also, like looking at people from the straw of your expectations. Looking at people from the, so you are getting a very narrow view of somebody. You are getting it. The person has many aspects, but you are looking at the person from the narrow straw of your expectations, and therefore you are only seeing frustration, disappointment. क्यों? क्योंकि मेरा जो expectation था पूरा ही नहीं किया उसने. लेकिन अगर हम अपना straw of expectations हटा देंगे, उस person को देखेंगे तो कुछ तो अच्छा भी दिखेगा. So there are many such nice principles. That's and in ashram these things become important. Then there will be lesser conflicts. Any other live questions? What's the time? 6:52 हो गया प्रभु. हाँ, how long we can? Any coordinator, any volunteer? You can go till 7 o'clock. Okay, 7 o'clock. So Alok Prabhu has certified. Yes, Prabhu.
बताओ भाई। आप कर क्या सकते हो पहले बताओ। वो समझ जाती हैं। देखिए बहुत चीजें होती ना कि सब भक्ति में जब आते हैं ना शुरू में, तो आपने देखा होगा कि हम बहुत ही कम लोग हैं जो ज्ञान की वजह से आए कि फिलॉसफी बहुत अच्छा लगा। सब इसलिए आते हैं कि हमको प्रेम मिला, ठीक है, कि प्रभु जी ने इतना अच्छा हमका फॉलोअप किया, प्रभु जी ने हमको प्रसाद खिलाया, प्रभु जी कितना हमको चाहते हैं, प्रेम की वजह से इतने लोग आते हैं। और प्रभु जी क्या है ना, ये प्रेम जो है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें करा ले जाता है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें। मैं अगर किसी के लिए ग्रेटफुल हूँ, उसके लिए अच्छी वैल्यूज, मतलब अच्छी बातें सोचता हूँ उसके लिए, उसे मैं सोचता हूँ उसने मेरा जीवन बदल दिया, तो वो मुझे बोलेगा प्रभु ऐसा कर दो, मैं बिना सोचे समझे वो चीज कर जाऊंगा। तो घर पे भी यही चीज होती है। कई बार हम लोग ना सोचते हैं यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहे हैं, ठीक है, प्रभु जी ने इतना अच्छा काम किया वॉइस में सेवा, हरि बोल, प्रभु जी ने ये किया, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। क्या घर पे कभी किसी को ग्लोरीफाई करते हैं? आजकल बहुत कल्चर केक काटने का, केक लाते हैं, पर कभी, ये मुझे पता है बहुत बाद में रियलाइज हुआ। मैं 5 साल हो गया शादी का, 5 साल हो गया है, तो मुझे लगा ना कि मेरी मम्मी को भी ना ऐसा अंदर में फील था कि कभी किसी ने मुझे सफिशिएंटली ग्लोरीफाई नहीं किया। वो कितना जीवन जिया उन्होंने, सोचिए शादी का उनका लगभग 30 साल, 30 साल नहीं, 38 साल हो गया, 82 में शादी हुआ था, ठीक है। अभी वो इतना शादी जीवन जी रहे हैं, बच्चे पाले, सब कुछ, इतना त्याग करना पड़ता है आदमी। आप जब देखेंगे ना, छोटा बच्चा होता है, बचपन से उसको पालना, पाल पोस के बड़ा करना, और वो किसी और की बात सुनने लगे, तुम्हारा अच्छा लगेगा क्या? कल की लड़की आई उसकी बात सुनने लगा, वो मेरी बात नहीं सुन रहा। पर बहुत अच्छे अच्छे फैमिलीज होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि जो कल्चर है एक दूसरे को ग्लोरीफाई करने का, कि हम बहुत कृतज्ञ हैं कि आपने इतना अच्छा हमारे लिए किया, आपने हमको ये दिया, आपने हमको ये दिया, आपने हमको ये दिया। कभी हम ऐसे ही सेमिनार्स होते हैं लैंग्वेजेस ऑफ लव पे, जो मैं एनएस कैंप का एक पार्ट था, जिसमें बताया जाता है कि हम लोग पहले ना लव लेटर्स हुआ करते थे, ठीक है, आजकल हम लोग मैसेजेस करते हैं, पर लव लेटर कोई नहीं देता है। कभी आप एक लेटर लिख के घर पे अपने पोस्ट कर दीजिए, पापा का बर्थडे हो, मम्मी का बर्थडे हो। ये देखिए, आप उन दोनों लड़ाई हो रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने लेवल पे इसको अप्लाई कर सकते हैं कि कम से कम हमारे साथ में ऐसा ना हो। और ये ना हो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम फॉलो करेंगे तो इजिली हो जाएंगी। और उसका मेन प्रिंसिपल वही है कि ग्रेटफुल होना, और ये प्रेम जो करा देता है ना, बहुत आसानी से होता है। प्रेम अंडरलाइन फीचर है, क्योंकि क्या है ना कि करते 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 ना कर्तव्य के तौर पे भी अंदर एक हॉलोनेस आ जाती है कि कोई मुझे चाहते नहीं, कोई मुझे रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। रिकॉग्निशन सबको चाहिए। आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको रेटिंग मिलता है, ठीक है, रिकॉग्निशन मिलता है ना, कोई अवार्ड मिलता है, रेटिंग मिलता है, सैलरी हाइक मिलता है। घर पे माता जी इतना काम करती हैं, उन लोगों को रिकॉग्निशन मिलता है क्या? कभी कभी नहीं मिलता। तो वो लड़ेंगे ही ना। आप उनको भी ग्लोरीफाई करिए, देखिए इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा बनाया। अब वो कभी कभी हो ये जाता है कि एक को ग्लोरीफाई किया तो दूसरा लगता है कि हमारी बुराई कर रहा है। वो है वैसा चीज, पर आप जेन्युइनली करेंगे ना ग्लोरीफाई, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। और होता है, मेरी मम्मी आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती है, बहुत अच्छे बनाती है। और मेरी वाइफ को भी रियलाइज हुआ कि अच्छे पराठे वो मम्मी बनाती है, तो वो अब जाके पूछती है, आप बताओ कैसे आलू पराठे बनाती हो? तो मम्मी को अच्छा लगता है, चलो वो पूछ रही है आगे। तो ये चीज आपको ग्लोरीफाई करिए, अप्रिशिएट करिए, एनकरेज करिए, अप्रिशिएट करिए। और कुछ कुछ चीजें अपना कभी लेटर पे लिख के भेजिए, एनिवर्सरी है उनका, बर्थडेज है उनका, इन चीज पे ओकेजन्स पे आप कभी उनको नाम, चलिए आज मंदिर चलेंगे, दर्शन कराइए, मंदिर में लेके आइए, पूजा से पहले बात कर लीजिए, वो महागालैंड लेके रखेंगे, गिव देम अ वीआईपी ट्रीटमेंट। तो जब आप वो बात आप कहते हैं, बात करते हैं मम्मी से, बोलते हैं, तो जब बोलेंगे तो वो सुनेंगे भी उस टाइम। मेरा भाई जनरली क्या होता है, ब्रह्मचारी लड़के निकलते हैं घर से, ठीक है, और लड़के निकलते हैं तो सबको लगता है ना कि घर से अलग हो गया। बट माई पेरेंट्स लिसन टू माई ब्रदर मोर देन एनीवन एल्स, क्योंकि उसका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है घर पे। मैं भले हफ्ते भर तक फोन ना करूं, पर उसका फिक्स है कि इस टाइम फोन करेगा, इस दिन तो करेगा, फोन करता है। he'll make phone call, he will ask ना कैसे हो आप, ये आपको कोरोना का किट के भेज दूं क्या, यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, आप ऐसे केयर करना है, ऐसे केयर करना है। वेरी केयरिंग। क्या जाता है कोई किसी से पूछने में? तो वो जब केयर जेन्युइन केयर आएगा तो अपने आप लोग सुनने भी लगेंगे।
I have 2 minutes to add a few things here, and probably this will be the last question because it's a very sensitive question. So Ambrisha Prabhu said from perspective of what we can do to wife and mother. I'll say one more thing, that when wife, let's say, so once Bhakti Rasamrit Maharaj had come to Pune. One lecture he gave on duties of husband. Many wives were sitting in that lecture. And the other lecture he gave was duties of wife. Many husbands were sitting in that lecture. And then the third lecture was duties of husband and wife. Yeah. So all of them came. Now in that lecture, one devotee wrote in a chit one question. Prabhu Maharaj, I am staying with my wife and mother, and between them I am becoming chutney. What to do? As it is, it must be there in recording somewhere. Chit Maharaj ke paas gaya, Maharaj opened. Maharaj said, ask other Anubhavi chutneys. Once I asked Gaurang Prabhu, Prabhuji, why, in Krishna consciousness also we see, even though all family members are devotees, still we see sometimes mother-in-law, daughter-in-law don't go well together. What is happening? Gaurang Prabhu started laughing. He said, Prabhu, in Kali Yuga, Guru and disciple are having conflict. Mother-in-law, daughter-in-law is eternally a conflict zone. Now coming to a serious aspect of it, 2-3 things are there. And we have to see which case is there. Many times mothers are immature. That's a fact. There are many mature mother-in-laws also who handle the new daughter-in-law with care. Unfortunately, in North India, housewife mothers who have been the supremo so far and who have not worked outside, so they don't know how to gel well with other individuals, right? They have a tough time getting another female in the same house. So there, एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती, right? So वो हो जाता है. So that could be one reason at times, wherein the mother is little immature because of some insecurity. How is that? तो different cases है और अलग-अलग केस को अलग-अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है. तो अगर मदर का immaturity है in being संकुचित mentality, scarcity mentality, insecurity mentality, मेरे बेटे का प्यार अब बट गया है, right? ऐसे होते हैं बहुत सारी mothers. तो क्या करना चाहिए? 2-3 चीजें हैं. एक तो मदर को समझाना चाहिए बेटे को अलग से सेपरेटली. दूसरा कि समझाने से हो सकता है उल्टा भी पड़ जाए, क्योंकि उसको लगेगा अब ये पत्नी वाला हो गया है. तो क्या करना चाहिए? डबल टाइम देना चाहिए मदर को. अगर हम आज तक जिम्मेदारी नहीं उठाते थे तो उठानी चाहिए. आगे बढ़ के मदर के लिए कुछ काम करना चाहिए जिससे कि मदर को ये, बिकॉज मोर इंपॉर्टेंट इन टेलिंग इज शोइंग. अपने एक्शन से दिखा दीजिए कि आप किसी दूसरे के नहीं हुए हो. और ये बताना भी जरूरी है कि ऐसा नहीं होता है कि शादी होती है तो आप किसी दूसरे के हो जाते हो. तो दोनों चीजें हैं. थ्रू नॉलेज which probably you will not give, somebody else has to give. Some elder male head of the family. इसलिए joint families can survive only when there is a head of the family. And you can't be the head of the family with respect to mother. Somebody has to be above mother. And that somebody will have to tell mother from philosophical perspective that just because your son has got married does not mean there is a competition between you and her. Both can coexist nicely, and your son is as much your son as he is her husband. So the husband of the mother should tell this. और जहाँ husband weak होगा, वहाँ देखो सास और बहू का झगड़ा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि सास को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है. तो 2 चीज मैंने बताई. एक तो ये some teachings to the सास, mother-in-law, and दूसरा the husband ऐसे भनक ना पड़ने दे मदर को कि अब उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है. उल्टा वो एक्स्ट्रा करे थोड़ा एक्सप्लिसिटली सोच समझ के. एक ये. दूसरा, ऐसा नहीं कि हर समय मदर-इन-लॉ इज टू बी ब्लेम्ड. आजकल ये डॉटर इन लॉ भी अलग अलग तरह की होती है, करेक्ट. तो इन दैट केस फिर डॉटर इन लॉ को भी समझाना पड़ेगा. लेकिन वहां पर एक चीज और देखनी है कि जो सोचो आप एक डॉटर इन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसका पूरा दुनिया बदल गई है, राइट. सो पहली जिम्मेदारी किसकी हुई? हाँ, पति को अच्छा हो. पति, हर पत्नी चाहती है पति राम हो और हर पति चाहता है पत्नी सीता हो. शुरू तो किसी को करना पड़ेगा ना. सिमिलरली डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ में, डॉटर इन लॉ चाहती है कि मदर इन लॉ मेरे को मदर जैसा प्यार करे, और मदर इन लॉ चाहती है कि ये मेरी डॉटर जैसा रहे कि मैं डांट भी दूं तो बुरा ना माने. करेक्ट. पहल किसको करनी पड़ेगी? व्हाट डू यू थिंक? मदर इन लॉ. Because you are the owner of that environment and somebody else is coming in your family. Therefore, Prabhupada writes in some purport कि mother-in-law जो mature mother-in-law होती है, seasoned mother-in-law होती है, वो अगर बहू को कुछ बताना भी होता है, बेटी को बताती है जिसके बहाने बहू सुन ले. बहू को डायरेक्ट नहीं डांटती है वो, क्योंकि अगर और शुरू के पहले दिन जो होते हैं ना, वो मैं क्या ब्रेक कर देता है चीजों को.
उसी में अगर एक प्रेम का वातावरण मिले, बिकॉज थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फीमेल, होने तो वो कुछ भी, उसकी गलती क्या है वो क्या नहीं वो हम बाद में देखेंगे, बट फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट. इसलिए मैरिज इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. हस्बैंड हैज टू गेट सम ट्रेनिंग एंड द फैमिली हु इज इनवाइटिंग द डॉटर इन लॉ इन द होम हैज टू गेट अ ट्रेनिंग कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट इट मींस टू गेट अ फीमेल इन योर हाउस. वो जमाना गया जब हाँ नाम के रिश्ते से हो जाता तारे मैं सास हूं उसकी, करेगी कैसे नहीं, और कर भी नहीं तो मेरे पर एहसान करेगी क्या, अपना कर्तव्य करेगी, ऐसी बोलती है ना मदर. ये सब गया जमाना. आपको एज ह्यूमन बीइंग पहले अच्छा व्यवहार दिखाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा. रिलेशनशिप असली वाला रिलेशनशिप, नाम वाला रिलेशनशिप नहीं कि अरे मैं तो सास हूं वो बहू है, नहीं. राइट. तो उसके लिए जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको एक अकोमोडेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए नई वाइफ के, नई डॉटर इन लॉ के लिए. उसके बाद जिससे कि उसको कंप्लेन का मौका ना मिले, तब तो पता चलेगा ना उसका असली रंग. और फिर अगर उसकी कुछ गलती हुई तो आप जब बोलोगे तो देन शी विल आल्सो अंडरस्टैंड. नहीं तो आपकी ही पहली अगर गलती हुई है तो वो चाहे कितनी भी थर्ड क्लास भी अगर डॉटर इन लॉ हो तो भी मुकदमा उसके फेवर में जाएगा. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? देयर आर मेनी डीप थिंग्स हियर इन्वॉल्व्ड. राइट. आई एम नॉट जस्ट फेवरिंग दिस पार्टी और दैट पार्टी. If you are trying to understand, and because daughter-in-laws also of all kinds, mother-in-law also are of all kinds, right? Irrespective of the kind, first is that the family has to create a very conducive environment for the daughter-in-law, an environment of love. उसके बाद अगर वो अपना रंग दिखाए दूसरे टाइप वाला, तो आप कुछ अगर करोगे तो वो आपके ऊपर उल्टा नहीं पड़ेगा. Because you will come to know that now clearly it's her mistake and she needs to be corrected. Another thing is that they are grown up individuals. They have to learn to deal with their relationship. It should not always be routed through the husband. Because अगर हमेशा husband के through routed होगा तो husband हमेशा धर्म संकट में पड़ जाएगा. इसका साइड लेगा तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, इसका साइड लेगा तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी. इसलिए they have to be also trained कि मेरी पत्नी है क्या वो खाली, तुम्हारी भी तो बहू है ना. Now you see what you should do. ये मेरी मदर है क्या खाली, तुम्हारी भी तो सास है ना. तुम्हारा क्या वैल्यू सिस्टम है सास को लेकर. यू डू एक्ट अकॉर्डिंगली. मेक देम अकाउंटेबल टू ईच अदर. ऑलवेज डोंट ट्राई टू बिकम अ शॉक एब्जॉर्बर. तुमको कोई प्रॉब्लम होगा मेरे को बताना, आपको कोई प्रॉब्लम मेरे को बताना, तब गया आपका चटनी बैंड बजेगा. टीटी टेबल टेनिस. अनदर थिंग, वाइफ में हैव सम जेन्युइन कंसर्न्स. अगर मान लो आप टेंपल में एक मैनेजमेंट सेवा कर रहे हो, और अगर एक डिवोटी आपके पास आ रहा है, प्रभु जी मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा शेड्यूल गड़बड़ हो रहा है क्योंकि ये डिवोटी की वजह से मैं साफ करता हूँ और वो डिवोटी बार बार लाके वहां गंदा कर देता है, मैं क्या करूं. और आप इंचार्ज हो, उसका सुपीरियर हो, आप उसको क्या बोलोगे? प्रीचिंग करोगे? प्रभु जी बी हम्बल, बी टॉलरेंट, यू विल डू द नीडफुल. राइट. सो व्हेन इट कम्स टू मैनेजरियल प्रॉब्लम्स वी आर नॉट सपोज्ड टू गिव फिलॉसफी. वी हैव टू डू द नीडफुल. तो देखना पड़ेगा क्या सच में कोई अत्याचार हो रहा है क्या वाइफ के ऊपर. क्या सच में ऐसा हो रहा है क्या कि सुबह से रात तक वो किचन में ही लगी रह जा रही है, कोई सोच ही नहीं रहा है कि उसने 5 मिनट का रेस्ट लिया क्या, और क्या उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है क्या. देन इट इज अ हस्बैंड्स ड्यूटी टू मेक श्योर दैट द नेसेसरी नीडफुल इज डन, मैनेजरियल चेंजेस आर डन, राइट, सो दैट थिंग्स आर नॉट सो देयर आर मेनी थिंग्स एक्चुअली. वी हैव टू सी क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है. इमेच्योरिटी की वजह से फाइट हो रही है क्या, कि कोई मैनेजरियल इशू की वजह से फाइट हो रही है क्या. सास ने चम्मच यहाँ रखी, बहू को यहाँ चाहिए क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर है. सास आ गया, इसके ऊपर डाइवोर्स हुआ है भाई. तो सास बोलती है कि क्या बार बार यहाँ रख देती हो, बोला ना यहाँ रखा करो. किसकी प्रॉब्लम है ये? सास की प्रॉब्लम है. हाउ कैन यू डिक्टेट कि ये यहाँ रखा करो. अरे इफ यू वांट हर टू कुक, लेट हर ऑपरेट इन द किचन अकॉर्डिंग टू द वे शी वांट्स टू. ना क्या प्रॉब्लम है उसमें. राइट. सो थोड़ा अकोमोडेटिव होना पड़ता है. एट द सेम टाइम वाइफ शुड नो कि अरे यहाँ इस घर में आई हूं मैं, तो इस घर में जो होता है पहले सीख लूं कि मैं अपना चलाऊंगी. कोई सास को सबसे बड़ी बात अपने अपना चलाती है, जब से आई अपना अपना चला रही है. बताओ पहले दिन से. करेक्ट. टिपिकल नॉर्थ इंडियन पायस हाउसवाइफ फीमेल who has not worked outside, who has not seen the world, and who has herself lived in a nuclear family, that mother-in-law has a tough time accepting a daughter-in-law. Typically, yeah, exceptions are always there, but मैंने बहुत पैटर्न देखा है इस तरह का. Right? Because लेकिन अगर कोई mother-in-law हो जो actually मान लो सर्विस करती थी पहले, she will typically not have a tough time dealing with the daughter-in-law because she has dealt with people. She knows individuality, she knows duality and diversity, right? And there are many things. और उस पे भी अगर फादर अगर थोड़ा हल्का सा सबमिसिव है मदर को, या फादर थोड़ा वीकर स्टैंड रखते हैं, करेक्ट नहीं करते हैं मदर को, एंड मदर हैज बीन द सुप्रीमो, राइट, तो फिर ये प्रॉब्लम और हाईलाइट होती है.
right? Then थोड़ा situation tough हो जाती है, but solutions are always there. Solutions are always there. Everybody has something to learn. And then worst case, if things are not working out, let us say, then we'll have to take strong stands also. Because हर दिन fight हो उससे अच्छा थोड़ा separate रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, right? And then again try to get back in through love. Right? So there are many things like that, and I have seen very closely that even though two people can be goddesses, मैं कब यहाँ बता रहा था कि कल congregation को बता रहा था, two people can be initiated devotees, they can be देवी in their own stand. और वैसे बच्चा को तो माँ तो देवी ही लगती है, बाद में जब दूसरी वाइफ दूसरी फीमेल के साथ हम क्लोजली उठते बैठते हैं ना, तब रियलाइज होता है कि एक सेकंड यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स मदर की है जो हमको पता नहीं चला था अभी तक, क्योंकि हमने जीवन में एक ही फीमेल देखी थी. You see, other female comes, we get a different view of the world. We get to know many things which we currently, and we were till now sold out servant of our mother, for example, probably, because we never knew that, okay, there is some shortcoming. Now, we should not see shortcomings in our elders that way. But at the same time, we cannot allow injustice to happen on the new lady who has come, just because elder is there. Right? And then the needful will have to be done. Prabhupada says, even if elders are wrong, we should never offer verbal arguments to elders. Right? But that does not mean you can allow injustice to happen on somebody. So there are many, this is a very intricate matter actually, and it's not very straightforward. We have to see the case, we have to understand what's happening, who reacted which way in which situation, right? But ultimately, husband will have to give assurance to the mother that don't worry, I'm not going anywhere. I'm your son. Earlier also I was your son, now also I'm your son. But I'm her husband also. How can we deny that relationship? If the mother-in-law is thinking, हाँ पत्नी वाले हो गए तो हो गए ना, अरे शादी कराया तुम्ही ने ना मेरा, अरे जो पत्नी वाले हो गए मतलब इस प्रॉब्लम क्या है, ऐसा बोलती है सब नॉर्थ इंडियन मदर्स, बड़ा मेरी बच्चे वाला हो गया है ये अभी. जैसे कभी-कभी बोलते हैं कि ना शादी में उसको मैच करते हैं ना, बोलते हैं लड़का लड़की का मत मैच करो, सास बहू का कर लो, उनका कंपैटिबिलिटी देख लो तो ज्यादा बेटर है, लड़का भी ऐसे कर ही लेगा. And so it's a like fun part. And one purpose of NS camp is also that कि जो गलतियां हम देख रहे हैं कि हो रही हैं, हम जब वो स्टेज पे पहुंचेंगे अपनी लाइफ में, तो हम वैसे इन-लॉज ना बने, हम वैसे पेरेंट्स ना बने. Exactly, that's very important point. At least जो भी पास्ट है जो है, जितना भी जो मैच्योर है, जो मैच्योर पर, when we will become elders, when we will have sons and daughter-in-laws, we know how to handle. We'll take care of things. बोला था आप बताइए इनको क्या कमी लगती है, वो बता दीजिए, और इनको आपको क्या कमी लगती है वो मत बोलिए. तुम लोग ऐसे बोल लिया खत्म नहीं, झगड़े नहीं होते. तो कई बार लड़ाई होती भी नहीं उतने बड़े मैटर. ऐसा हो गया, ऐसा भी किया है, साथ में ले आया ना, और इतना डर्ट इतना कीचड़ और निकाला इसने उसका और निकाला कि अब जिंदगी को अकेले कर. So you see, everybody is a Brahman in himself or herself. You never know how who will react in what situation. There is no one jackpot knows the solution. कभी-कभी बोलते भी नहीं है, कभी-कभी बोलते भी नहीं है. आप बैठा दोगे, मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत क्यों लगती है मेरे से. वैसे मैं फर्स्ट टाइम जब एक प्रपोज्ड मैच देखने गया था, उस लड़की से कुछ ही पूछता था मैं, तो ऐसा कर लेते हैं आप, हाँ ये आता है, हाँ ये है, जैसा आप बोलेंगे, मतलब अपना खुद का लाइकिंग ही नहीं है क्या, जो भी बोलो हाँ 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 सब में हाँ था. तो वो कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आप बुलवाना चाहते हो पर बोल नहीं रहा है. सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ना कि जो आप चाहते हो वही हमेशा वैसा हो जाए. आपके केस में हो गया, बट के उसका उल्टा भी हो सकता है बहुत कुछ. That's what people are. You never know. You may do something with good intention, something उल्टा may happen. मेरे रिलेटिव का ऐसी केस चल रहा है, वहां पे द गर्ल कम्स फ्रॉम बैकग्राउंड जहाँ पे घी खाने पे बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और लड़के के घर में बोलते हैं नहीं सरसों का तेल और घी खाओ, वही हेल्दी, रिफाइंड मत खाओ, और घर में रिफाइंड ही खाया जाता है. अब फाइट क्यों चल रहा है, तब से ऑलमोस्ट 2 साल हो गया है फाइट चल रहा है. ये फाइट इसलिए चल रहा है कि लड़की से खाना नहीं मिला है. लड़की बोलती है कि ना कि रिफाइंड में ही बनेगा, तुम लोग सब मोटे हो रहे हो, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तुम्हारा हार्ट अटैक आएगा, और वो लड़का कहता है घी में खाओ. तो वैसे लड़ाई होती है. मतलब क्या मैटर क्या है, छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज है. एंड द गर्ल आल्सो शुड अंडरस्टैंड कि ना कि वी आर गोइंग टू न्यू होम, एडजस्ट कर लो. ओके, सो वी आर कमिंग टू एंड ऑफ इट. जस्ट वेरी क्विकली वन क्वेश्चन व्हिच वाज वेरी रेलेवेंट, बट ये जो एक स्पेशल हम लोग सेशन लेते हैं ना, हाउ टू चूज योर लाइफ पार्टनर, उसके लिए ज्यादा रेलेवेंट है. बट स्टिल सिंस द क्वेश्चन हैज कम, व्हिच टाइप ऑफ वाइफ वी शुड चूज, यू नो, वर्किंग और नॉन वर्किंग. One man's food is another man's poison. There is no right or wrong answer.
You should not. Krishna also didn't give any yes, this is right, this is wrong. He gave options and he gave ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा. If you are marrying a working wife, you have to understand कि भैया वर्किंग वाइफ के जो consequences हैं. आप चाहो भाई वर्किंग वाइफ भी हो, मेरा घर जो है लक्ष्मी संपन्न एकदम ऐसा कुछ हो जाए, सब बढ़िया से चकाचक रहे, जब मैं ऑफिस से आऊँ तो खाना वाना बन के रेडी रहे, बच्चों का भी सब बढ़िया से पाल पोस के परवरिश बढ़िया से हो रही, कैसे हो सकता है? आप कृष्णा से शादी कर रहे हो कि एक साधारण ह्यूमन बीइंग से शादी कर रहे हो, तो उसका consequences एक्सेप्ट करो, कोई गलत नहीं है. और अगर आप नॉन वर्किंग वाइफ से कर रहे हो तो उसके और कुछ कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, कि चलो उसमें क्या झगड़ा ज्यादा होता है, घर में रहते हैं तो उसको शी इज आल्सो नॉट यूज्ड टू डीलिंग विद अदर पीपल, ये वो, एंड सो दिस इज पर्सनल प्रेफरेंस. बट व्हाटएवर इज द प्रेफरेंस, मेक श्योर यू क्लैरिफाई इट बिफोर मैरिज. देयर शुड नॉट बी सरप्राइजेस दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स. एंड देयर इज अ मिडिल पाथ आल्सो. Let's say because of some reason somebody has on the basis of convenience. In terms of the environment, not in terms of duties, in terms of the fact that, okay, when I have some bank balance, when I have family members, when I have a wife, when I have a life partner, when I have a companion, when I have an emotional security, when I have my friends and family members, they are around me, when my parents are around me, that makes me feel comfortable, right? Then that is my environment. Light traveler, heavy traveler is always telling. On the other hand, all these things, I better like to be as an individual, By the way, even in Brahmacharya ashram, it's not that you can live in individual, because I said for ashram, whether it is Grihastha ashram or Brahmacharya ashram, relationships are important, right? So, but anyway, I don't need a lot of emotional support and all that,
I don't feel a need of a female in my life. And need of female is not only from sex perspective, it's not only from lust perspective. You know, female is a companion, a life partner who makes you complete, right? So I don't feel that need. And मेरे को एक दो जोड़ी धोती कुर्ता से अगर काम हो जाता है, रात को कपड़ा धो के सो जाता हूँ, ठीक रहता है. You know, सुबह wash, जैसे अभी we were having meeting with Aisha, and they said I have to wash clothes. मैं तो ऐसा lifestyle में पागल हो जाऊँगा. You know, भैया I want somebody to wash my clothes. I want somebody to, you know, to be able to take care of these things. You know, तो अगर इस तरह का मेरा environment है जिसमें I will be able to flourish, कि अरे आज यहाँ कल वहाँ, भरोसा नहीं अब कहाँ जाएंगे, इधर उधर ही घूम रहे हैं सारा टाइम. You know, आज इस घर में अगर ये मंदिर गिर गया तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा, यहाँ में मैनेजमेंट में झगड़ा हो गया तो अब ये टेंपल शिफ्ट करके वहाँ टेंपल शिफ्ट कर गए. You know, जिसको ऐसा लाइफस्टाइल ठीक चल रहा है तो ब्रह्मचारी आश्रम लेगा. और जो ऐसे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई भी आश्रम चूज करने से पहले उसका डिटेल्स पता होना चाहिए, और जो उसमें 10 साल 20 साल रहा है उससे डिस्कस करना चाहिए. बाहर से देखने में तो दोनों अच्छा लग सकता है, या ये अच्छा लग सकता है, ये अच्छा लग सकता है. But you have to understand what you are signing up for by talking to more mature, seasoned devotees, brahmacharis, right? So brahmachari will say, brahmachari बनना है तो 10 बार सोच के बनना. ऐसा नहीं यहाँ सब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस करेंगे, आगे जाके पता चलेगा कि वहाँ क्या होता है, कैसे आइडेंटिटी क्राइसिस होता है. Unless you have strengthened your relationship with Guru and Krishna, unless you are seeking shelter and emotional support from Guru and Krishna, you may think that जमीन पैरों तले खिसक गई, कहीं के नहीं रहे, you know, and then 10 साल बाद you may feel the need to change. Nothing wrong in that. Those who are doing it, they are at least making progress. They are going ahead in life. But you know, better to learn, you know, and you know, take decisions, because that has a lot of repercussions also in life, and not everybody will be fortunate to be able to support this decision in such a way, right? So therefore, we should better understand what is what, and in general, it is a known fact that there will be lesser brahmacharis, more grihasthas by nature, because not everybody can choose that lifestyle. And as Prabhupada said, as far as spiritual life is concerned, as far as Krishna consciousness is concerned, there is no difference. So therefore, we are summarizing, our choice should be based on where we feel better, not in terms of यहाँ ये ड्यूटी करना पड़ेगा, वो ड्यूटी नहीं, ड्यूटी छोड़ो, पहले जो आश्रम का डेफिनेशन है. Oh, you will have house, you will have a, you know, bank balance, you will have wife, you will have mother-in-law, you will have mother, whoever, you know, you will have family members, you will have children. You feel nice in that environment. Versus सब अपना अपना, you know, देख रहे हैं, you know, और सब इंडिविजुअल टाइप हैं. आज ये दो फ्रेंड्स के साथ रह रहा हूँ, कल दूसरे दो फ्रेंड्स के साथ रहूंगा. आज ये टेंपल है, कल नहीं रहे, क्या पता. इस टेंपल का मैनेजमेंट चेंज हो जाए, लीडरशिप चेंज हो जाए. पर मैंने तो आई डिसाइड ले लिया ब्रह्मचारी बनने का, तो मैं कहाँ जाऊँ, चलो इस टेंपल से उस टेंपल चला जाता हूँ, घूमता हूँ अपने लिए, कहाँ बढ़िया जगह मिले मेरे को, राइट. तो उस टाइप का मैं, अगर हमको लगता है नहीं मेरा गुरु कृष्ण का रिलेशनशिप इज वेरी स्ट्रांग एंड आई एम एबल टू टेक केयर ऑफ दैट, दैट इज वंडरफुल. बट दैट इज द क्राइटेरिया. फिर उसमें फिर जो उसका रिपरकशन है वो लेना पड़ेगा, और इसमें जो इसका रिपरकशन है वो लेना पड़ेगा. दैट्स व्हाट इट इज. ओके, थैंक यू वेरी मच. वी विल एंड देयर, वी विल एंड हियर नाउ. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. Very sorry for extending by 50 minutes. Ideally 6:30 we were supposed to end. It will be most blissful, Prabhuji. The way we are sitting on the wall. So let us thank Prabhuji. He has come all the way to give all of us association for this one particular day. Prabhuji's sister was coming after a long time from outside, but Prabhuji still agreed to come here, and we could see that in a very practical way he could speak about the responsibilities, about the purpose of the Grihastha ashram, and also the question answers of all the day-to-day life problems. And the way devotees were enthused to hear it, participate into it, shows that all of you have been very, very happy. So let us thank Prabhuji by Lord chanting 3 times. And let us thank also our Ambrisha Prabhuji by Lord chanting. And of course, there will be some more questions. So Prabhuji will be available with us tomorrow also, Ambrisha Prabhuji. All of you are most welcome to ask those questions tomorrow, as much as you want. Thank you so much, Prabhuji. So devotees can continue now. We have a bhajan sandhya going on, and 7:45 dinner prasad will start. Thank you all for your patient hearing. It's a long time. सोप वाटर है. मैं सोचा फ्लेवर आ रहा है, मैं कुछ फ्लेवर डाल के दिया है. गौरव प्रभु नहीं, वो गौरव प्रभु क्या है?
Yeah, I did. Now that I have understood this was so water, now I need more water. I'm just bringing it. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कब से आवाज अभी देखता हूँ प्रभु जी। Hare Krishna. प्रभु जी, somebody can tell from how much time the sound was not coming? नीरज गोस्वामी प्रभु। Yes, Prabhuji. Sound is coming, Prabhuji. हाँ, पूरा 100%। I have joined almost 5 minutes. Just 5 minutes. 5 minutes. Yes. Shyam ji Prabhu has mentioned 7:14 voice is not coming. I think fine only. ठीक है प्रभु जी, fine then. Thank you. हरे कृष्ण। सुदर्शन प्रिया। अच्छा। अगर वो नीरज गोस्वामी को आ गए ना? हाँ, आ गए। उनको बोलो हम आधे 5 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। नीरज प्रो एंड सागर पूजन करते हैं। हाँ, नीरज प्रो एंड सुदर्शन प्रिया प्रो can be there प्रभु जी। We are starting in 15 minutes, 5 minutes. 5 minutes. हाँ, you can be there प्रभु जी। We'll start now. That meeting for leaders, that one. 5 minutes. This one only, Prabhu. This meeting ID only. क्या प्रभु जी, ये मीटिंग? हमें इसी में ज्वाइन करना है। हाँ प्रभु जी, आप मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ और फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे।